They're just carried to the wicket-keeper. Well, that was one hell of a delivery to start the match with. Good carry to the wicket-keeper and a very passionate appeal. But the umpire doesn't seem interested, so we're going to move on to the next ball. Well, looks to me that this surface will surely give a bit of the boost to the pacers. Good delivery, or just squeezing through. Arbaz Khan just misses it, but no damage done. Well, Hijab, this is really a shorter boundary, and I think so that couple of deliveries, like 2, 3, 4 deliveries in the first over, they can watch it, because sometimes the surface gives you a bit of the surprises, as we did see that 2 deliveries just whipped up. Oh, absolutely. Although this is a 10-over game, you still have to play a few balls to get a hold of the surface and to understand where to hit that. And we can see that Daniel has already played 2 balls. Lahore Heroes has got off the mark now with their first run on the second ball. Well, Daniel is not happy. I think so somewhere at side screen. Because normally it happens in the modern cricket. We used to have black cloth onto the boundary line where advertising board is there. There you go, Saad Rashid, really a good actor, good bowler, good athlete. Look at his body, have a good run up, starts up here, gathers his force and pace. Good delivery, into the black hole, the wicket number 1 goes down. There you go, Islamabad celebration starts here. Daniel Rashid could not get off the mark here. He is gone on the very first ball that he has faced. And that was a very good delivery by Saad Rashid. Excellent line and length. He knew exactly where that was going to go. So Lahore Heroes have lost their first wicket. In fact, he's not Daniel. Murad Haider departs the first wicket down. Kamran Khan is the new batsman for Lahore Heroes. He's walking down to the pitch now. The score is 1 for 1. And we're still in our first over. 3 deliveries gone, 3 to go. This is an excellent start by Islamabad. The captain seems happy. Yes, exactly. Because when you're getting a first wicket in a first over, like this, in an in-swinging delivery into the black hole, no reply from the batter, so the bowler's morale goes up. So the new batter, Kamran, comes in, Kamran Khan, and there you go, Saad Rashid. What a wonderful delivery he bowled there. And still his stretcher. Look at the beauty, tall, open-chested, young and fresh. There you go, Kamran, much heavier. Time for him, and he's just been trying to go through. Tipu in action. That's a wonderful effort in the field by Tipu. He's happy, so is the team. Saved a run there for his team, didn't he? Yes, exactly. It's really a good play. It's like active place, I must say. Short extra cover. All the times the batters, they've been going through the drives and they're trying to get some more runs. Really a active place. And Kamran really going after the bowler.
because that previous delivery he middled well. No, that was clearly drifting down the leg side. Good umpiring. Well, Saad is mixing it up. Previous ball was outside the off stump. This one has been drifting a little bit towards the leg stump. He's not going to let them rest. He is relentless. Yeah, Kamran is still having a bit of the look as Saad has been marking and moving on his mark, in fact. He's really in a good form and good rhythm. Yeah, look at that, how he takes off. Again, we're just going through. Deep back foot point, run away for 4. In fact, this has gone down to the third man boundary. So runs are there. First boundary for Lahore Heroes. Came from the bat of Kamran Khan. Exactly, good finish of the first over from both sides. In fact, 5 runs on the card with a wicket down. Lahore Heroes. Zaman Khan, the new bowler from Lahore City. Really a good, talented actor. A charming personality. Young face. And he's undergoing a couple of his good drama serials almost since last 1.5 months. And his fans will surely be watching him on TV in the recent, like in the near future, like after 4 or 5 months. But he's really a top star. We will surely give him a close look at how Zaman Khan looks here in cricket kit. Or just getting... there you go. Zaman Khan comes up. He's really a good bowler. Trust me, like Mohammad Wasim Jr. in Pakistan cricket team. He has got a similar form of action and swings the ball around. And the same kind of hair. Yes, exactly. Look at that, how he's been gripping the ball. And his teammate, Daniel, will be facing him. Down the leg side, fine leg was up in 30 yards. 1 bounce, into the fence for 4. Daniel Arshad on the charge now. He's played 1 over. And he looks a bit more comfortable now. Taking on Zaman Khan on the very first ball. Down the leg side for a boundary. It's 9 for 1 for Lahore Heroes now. Yes, that was really a good hit. Start bit of back of length, picked it up earlier, and you're smashing it over the long leg region, 4 runs. Have a look. Back of length, dispatched. Excellent, good hit. Too much weight towards offside. That ball beats the batsman and the keeper. It's been given as a no ball. Well, Zaman Khan overstepped over there, did he? Yeah, I think so, because it was pretty wide, but it was off the popping crease. Yes, there you go. Clearly overstepping the line here.
So we are going to have our first free hit of the tournament. Yes, and let's see that how it will be coping up. Again, way towards offside, swinging, and they're getting a bit of the swing there. I think that this is really where he's been pitching the ball up. Back of line delivery is not swinging. He wants the batsman to reach for it, but that's a little bit too wide. So we'll have another go for that free hit. And let's see what comes out of it. Well, I think so that he's not accurate much enough, because he feels just pitching it more like in a middle stump. That will be more good delivery, but again it's a wide. He's just keeping himself way towards offside. Oh, that's got to be a bit frustrating for the bowler. You've got one no ball and then you've got two wides after that. His teammates are coming up to him. His captain is guiding him. Yeah, Zaman Khan is informed cricketer. Almost he's playing since last 3 or 4 years. There you go, the ball went high. If anybody can catch it, no matter. Well, you just need to stop it. Agha. No, it's not Agha. Similar kind of. The fielder was Asim Mahmood. Could not get there in time. Nevertheless, he saved the boundary. I think Zaman is pretty lucky now, just getting away from that delivery. And he should accurate his line here. Pitched it almost in a middle stump, then trying to get it away from the right-hander. Away swing. Well, Rashid should be active, and there you go. Agha Shiraz in third man area, which is, I think, a short third man. Play towards onside, fine leg, space available, 4 runs. It's Danial Arshad again, taking full advantage of that free hit. And we have got our second boundary of the over. Yes, well hit. Again, Zaman pitching it, touch shot. And look at the beauty, it's good towards onside, Danial. So they should not be bowling him anything like down the leg side. They should keep him towards offside to restrict him. Well, Daniel has mapped the ground pretty well. He knows where all the fielders are, and he's choosing the gaps very accurately. We've only had 3 legit deliveries in this over. We've got 3 more to go. Yeah, it's not a bit of more longer over, like 1 no ball, 1 wide, and wide, couple, then boundary. And still Daniel's looking towards onside. He's marking his fielders. Good delivery. I think that's been a pretty good line to bowl to Daniel. That's a good recovery from Zaman. Captain has had a bit of a chat with Zaman, so let's see what comes out of that. This is a good over for Lahore, though. Again, getting towards offside. Is another wide. I think that sometimes when you're not feeling comfortable, you should change your angle. Come over the wicket, around the wicket in fact, to make it more easier for yourself, because I think he's trying to avoid Daniel to bowl towards onside or the leg side area. That's why he's pitching more deliveries towards off. That's the 3rd wide of the over. He just wants Daniel to reach for it, but it's just too wide every time. That was a legal one. Good one too, because we had witnessed a bit of the swing there in that delivery. Well, if you are living in Rawalpindi, Islamabad, you should come here and witness these stars. They're playing here. Come and have a wonderful time, because this evening is really getting more cooler than the previous ones. There you go. We'll surely run away for 4.
because the pace is there. Nobody could stop him. It's a bye. So many extras in this over. And it goes to an end of this over, I think, legally and officially. 23 runs on a card with a wicket down. Well, I don't think that's where Daniel intended the ball to go, but he'll take those 4 runs nevertheless. The score for Lahore Heroes at the end of the second over is 23 with a loss of 1 wicket. And this has been a pretty good over. Starts again. Kamran should be feeling some more sorts of pressure because he's the one who is more accurate than the 2 bowlers been utilized so far from Islamabad side, because he has got a wicket. He's been more accurate. Good hit down the ground. Has onto the boundary line. It's been protected. Agha Shiraz is the fielder. He does well to protect that boundary. And Saad has been good up until this point. This is his second over of his spell. He's more accurate. His line and length is a bit more on point today. Let's see if he can get another breakthrough for his team today. Just going towards onside, and they already knew that anything down the leg side, that will surely be punished. As Daniel just going towards onside, space is empty, and he will surely hammer you hard all the day if you'll be pitching those deliveries towards onside. It seems like Daniel Arshid came with a plan, and he is executing it beautifully. He's picking up the boundaries and the gaps accurately, and look at that. No chance for the fielder. And that adds 4 runs to the total for Lahore Heroes and takes the scoreboard to 28 for the loss of 1 wicket. Again, pitched it towards offside. Lucky enough that you're just skip away from that delivery, because umpires, they're really harsh. Anything on that marking line goes offside, they give it wide. Well, we have seen Saad bowling some peachy deliveries just like that one. Beats the batsman right there. He's bowling beautifully. Yeah, lots of advices. And I think so, rightly so, because I think that Zaman over was there, that just let them bit of the move costly.
there you go. Some insects around. I had an experience today. Good delivery. On to the back foot, but they have just gone for a single. .4, 29 on the card, just lost a wicket. Remember, this is T10. You need to whip up quickly. You need to wake up quickly in these sorts of games because time is money, precious. You need to keep your watches all the time ticking. Have an eye on those. That's inside. Edge went down to the hill for 4. Lucky 4 runs. That's a bit unlucky for the bowler. We got that passionate shout out of Saad as well. I think he was expecting that ball to hit the stumps. But Kamran Khan has been lucky, and that ball has went to the boundary. Adding 4 runs to the total, it takes Lahore Heroes to 33 for the loss of 1 wicket. Yes, have a look on those runs because that ball is just travelling quite quicker. Though that we had a bit of the heavy rain today. Ground stuff well done. Pindi Cricket Stadium. We have made it through today. Well, that's been slipped through, but over ball 3 gone. 33 for 1. Lahore Heroes. There you go, change your bowler. And he's been welcomed with a good hit, but this time they have learned from their mistakes. They have applied one of the fielder at far leg deep. That's really a good option because every time when Daniel is there, you need to clear those onside. Change of bowler now. We're seeing Rizwan come in to bowl for Islamabad Warriors. Zaman Khan has been taken off of the attack for now. Kamran Khan currently 9 from 6. Well, that's gone aerial, but just landed safely in front of Asim, who is at deep. I think so. It's a good option now because you need to go aerial at this stage. After this, you will be having lesser deliveries, lesser overs. That's gotten a bit wide. That's the line that we have seen most of the bowlers bowl today.
but they have not been able to get it right. We've seen so many wides until now. Yeah, it's a good way to deliver fuller length deliveries when you're keeping the ball ahead and more up. There are always the chances that you've been getting some swing, but you need to be more accurate. Rizwan Ali is not happy the way that ball has been pitching, and I think so he's not been able to control those. Well, not yet. But we still have half an over to go. There you go, hard hit, maximum, or just in boundary. I think it's into the boundary. Yes, one bounce, 4 runs. Good quality shot. He's really a clean hitter. Daniel picked that one up very early. He knew exactly where that ball was going to end up. And as a reward, he gets those 4 precious runs for his team. But Rashid is just having a bit of the words with his teammate. I think so, just saying you need to keep your fielders more at deep. Fine leg fielder. Just been called off. There you see. Courtesy the shot. Back off lane. Enough time. Not been forcefully played, but still he's managing to get a boundary on that delivery. Score approaching 40. Pretty watchful, left it alone. And Rizwan is just having a bit of the question there. Question mark from umpire. Well, he's not happy. And like you said, umpires have been a bit harsh today. But we've seen bowlers bowl to that line over and over again, but they're not getting it just quite right. Maybe it's time to try something new? There you go, hard hit. But this time, bit of the good bounce. Not been able to judge it properly. Daniel. Rizwan given 8 runs in his 5 deliveries. 1 ball to go. I think that another good Yorker to finish this over might be that you can get this prize wicket. Dot delivery to finish the over. 4 gone. Lahore Heroes 41 for 1. Almost into the halfway stage of this inning, and Arbaz Khan, he has been brought in. Pathan's arm. Let's see that if he can be getting a breakthrough from here, because lots of leg breaks, might be a medium pacer. Let's see that what he will be delivering here in the center. Well, Arbaz is just fixing his players, and he should be bowling accurately, because when you're taking your fielders, as per acting upon the advice of your captain, as Mo Marana is just having a bit of the words chat with his bowler. 2 fielders towards on, 1 towards off. I think they've been having a bit of the mix-up, but time is money. You need to finish this inning. The match referees
Our officials, they must be watching it. Yes, Rashid clearly giving an impact, make it more quickly. Third man is way down. It's a wide delivery down the leg side, starting off with an extra. Well, the new bowler is Arbaz Khan, keeping up with the tradition of starting the over with a wide ball. Yes, and he's all the time looking a bit more in getting through, because always his first ball is a loosener. There you go, hard hit like a baseball. It's a long on position. That was hit hard by Kamran Khan. All the way down to the ground, very well fielded, and just one run added to the total for Lahore Heroes. And I think it's not much more threatening. Daniel has just taken his helmet off, and he's watching the ball more closely, more openly. And let's see that half of the stage here in this inning. If they can add like another 40 to 50 more runs, scoring or finishing it at 110, 120. Because in T10 you need to be like 110, 120 to be on a safer side and give something to your bowlers. Well, Muammar Rana said that they would like to restrict the opponent to 80, 85 runs. That would be their ideal target to chase. But let's see if Lahore can cross that 100-run mark. They're all appealing. But umpire said not out. They went across to play that mighty hit, but just lucky enough. There you go, that went high. Everyone watching, 3 fielders. In fact, gathering to collect that one ball, but Tipu had then got it into his hand, but safe space. 3 fielders converging on that one ball, but it falls safely. Just 2 runs off of that. There you go. I think so. That's been firmly hit right into the middle of the stick and going all the way. Clean, massive. First 6 of the tournament for this match comes out from the bat of Daniel Arshad, and that's a clean hit. Yeah, have a look right underneath of the bat and just flying high, finishing its journey there. Out of the fence, really a wonderful hit. In mind you, he's in a good nick. He's been doing practice since last 3 or 4 months. There you go again. This is miss hit. Anyone? Comes, I think Salman was there, but he dropped it. Well, that one was a sitter. I'm seeing some disappointed faces. Yes, exactly. That went too high. Sometimes you might be missing the color because the cloudy weather just giving a bit of the cushion. The ball's been disappeared. But again, this is going high, straight enough. Insult added to the injury with a mighty 6 to finish this over. 5 overs gone. Lahore Heroes 58 for 1. Well, this is the story so far. Daniel is still going at 29 runs. Lasset delivery, 17 runs in 9 for Kamran Khan. 1 wicket, that is Haider Raza, departs earlier, just only scoring 1 run. Well, before the next over starts, we have got the change in com box. Numan Chaudhary and Saim Ashfaq will be joining you.
बहुत बहुत शुक्रिया एजाज। 5 ओवर्स के बाद मजमूई स्कोर है 58, 1 विकेट के नुकसान पर लाहौर हीरोज़। टॉस जीतकर इस्लामाबाद वॉरियर्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ मौजूद हैं साइम। वेलकम साइम, उम्मीद करते हैं कि आप T10 क्रिकेट को एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच नोमान। T10 क्रिकेट और इसके साथ साथ रावलपिंडी के मौसम को भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। गेंद को उठाकर खेल दिया लेग साइड की जानिब और स्क्वायर लेग पर गेंद जो है वो फेंस को क्रॉस कर जाएगी 6 रन्स के लिए। तो आगा शराज ने अपने स्पेल का जो है वो बिल्कुल ख़राब अंदाज से आगाज़ किया और गेंद थोड़ी सी लेग साइड की तरफ थी, इसको दानियाल ने उठाकर खेल दिया और अब अपने स्कोर को उन्होंने 35 तक पहुंचाया है। बड़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे दानियाल अरशद। जी बिल्कुल नोमान, बड़ी अच्छी बैटिंग की है अभी तक। 35 रन पे मौजूद हैं, 21 गेंदें उन्होंने खेली हैं और कैच मिस किया था लास्ट ओवर में। आपने देखा होगा एक सेटर था मगर मिस किया, लेकिन अभी उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं रीप्ले, और लेग साइड की जानिब इस बॉल को भेजा बाउंड्री लाइन से बाहर और बड़ा खूबसूरत छक्का। आगा शराज की अगर हम बात करें तो इन्हें लेकर आया गया है कमेंट्री बॉक्स एंड से और यकीनी तौर पर कोशिश होगी यहाँ पर इस्लामाबाद वॉरियर्स की कि किसी ना किसी तरह एक विकेट हासिल की जाए, क्योंकि ये पार्टनरशिप बड़ी शानदार चल रही है दानियाल और कामरान के दरमियान। और तो फिर इसको सीधे बल्ले के साथ खेला और आगा शराज ने अपनी गेंद पर खुद ही फील्डिंग की। इस बार एक और बड़ी अच्छी बॉल थी, यॉर्कर करवाना चाहते थे और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। फील्डर मौजूद थे उस पोजीशन पर और वापस थ्रो किया कीपर के हाथ में और 1 रन आसानी से मिलेगा यहाँ पर कामरान को। इस तरह से उनका मजमूई स्कोर पहुँचा 17 रन्स पर। 9 गेंदें वो खेल चुके हैं और इसके साथ साथ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर दानियाल मौजूद 36 रन बना चुके हैं। 23 गेंदें उन्होंने अभी तक फेस की हैं। जी हाँ बिल्कुल, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बरकी कुमकुमों को रोशन कर दिया गया है। अब सकते हैं इस बार इस गेंद को एक मतलब फिर सीधे बल्ले के साथ खेला। लॉन्ग ऑन पर 2 फील्डर्स मौजूद हैं, अच्छी कोशिश यहाँ पर फील्डर की, लेकिन वो इस गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। मिर्ज़ा जमान और आसिफ अली यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो इस गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हो सके और इस टूर्नामेंट के बाउंड्री काउंटर में इजाफा होता हुआ और शानदार बारी कर रहे हैं यहाँ पे कामरान और दानियाल। जी बिल्कुल नोमान, गुनगुनाते हुए बादल रावलपिंडी स्टेडियम के ऊपर आप देख सकते हैं। मौसम बड़ा सुहाना है और इसके साथ साथ बाउंड्रीज की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि ये T10 है और इसमें रन्स अभी तक 70 हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर और 6ठे ओवर का खेल जारी है। इस बार फिर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, मिस फील्ड हुई गेंद और फील्डर मौजूद थे उस पोजीशन पर कामरान, जिन्होंने 2 रन आसानी से हासिल किए। आगा ने अच्छी बॉल करवाई थी, फिर से बड़ा अच्छा शॉट खेला, इस बार ऑफ साइड पर कोई फील्डर नहीं और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर। क्या खूबसूरत शॉट खेले हैं और आगा मुस्कुराते हुए कि अच्छा बॉल करवाया था उन्होंने और आउटसाइड ऑफ स्टंप ये बॉल थी, मगर क्या ही खूबसूरत अंदाज में बैट्समैन ने खेला उसे बाउंड्री लाइन से बाहर और ये गेंद गई 4 रन के लिए। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर दानियाल अरशद। ये देखिए आगा सिराज की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी कि फील्डर जो है वो मौजूद नहीं थे। डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को रोकने में कामयाब नहीं, उठाकर खेल दिया सीधे बल्ले से। यहाँ पर फील्डर गेंद को देखते ही रहेंगे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी 6 रन के लिए। तो एक महंगा ओवर इख्तिताम पजीर हुआ है आगा शराज का, जिसमें उन्होंने 23 रन दिए और 6 ओवर्स के बाद मजमूई स्कोर है 81, 1 विकेट के नुकसान पर और दानियाल अपनी शानदार बल्लेबाजी को जारी रखते हुए।
6 ओवर्स के बाद 81 मजबूरी स्कोर है लाहौर हीरोज़ का, 1 विकेट के नुकसान पर। और कप्तान मोहम्मद राना टॉस पे कह रहे थे कि 85 पर रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो लाहौर हीरोज़ की टीम है वो भरपूर प्लान से आई हुई है आज। और अगर हम इस विकेट की बात करें, जो कि बाउंड्रीज छोटी हैं, तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 10 ओवर्स के मैच में लगभग 120, 135 रन, 130 रन अगर आप करते हैं तो यकीनी तौर पर बैटिंग टीम को काफ़ी एडवांटेज होता है। और यहाँ पर लाहौर हीरोज़ की टीम बिल्कुल उस प्लेटफॉर्म को हासिल करने में कामयाब हुई है जहां वो स्कोर बोर्ड पर लगभग 120, 125 रन जो है वो सजा सकती है। जी बिल्कुल, इसके साथ साथ रिजवान आए हैं बॉलिंग एंड से, और दानियाल को आप देखें कि 46 रन पर पहुंच चुके हैं, 25 गेंदें सिर्फ उन्होंने खेली हैं। और इसके साथ साथ कामरान जो कि 22 रन पर खेल रहे हैं, तो 81 का मजमूई रन हो चुका है 6 ओवर्स में, 85 तक रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर पाएंगे। एक और बार अच्छी बॉल थी, इसे खेला धीमे अंदाज में, फील्डर वहां पर मौजूद, और 1 रन आसानी से हासिल किया। इस तरह मजमूई स्कोर पहुंचा 82 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। कामरान खान बैट्समैन हैं, उनके साथ दानियाल स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद। एक अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली अपनी टीम के लिए, और ताबड़तोड़ इनिंग्स खेली, सिक्सेस लगाए, फोर्स लगाए, अच्छी बाउंड्रीज लगाई, और अभी भी नॉट आउट हैं। रिजवान ने पहला अच्छा ओवर किया था, सिर्फ 8 रन दिए थे। और ऐसी सूरत हाल में आपको यकीनी तौर पर कुछ तजर्बाकार बॉलर्स की तरफ जाना होता है जब इनिंग्स का जो है वो इख्तितामी फेस चल रहा होता है। और यकीनी तौर पर रिजवान से यही उम्मीद होगी कप्तान मोहम्मद राना की है कि तवातर से अच्छी गेंदें करें और यहाँ पर रन्स रोकने की कोशिश करें इस्लामाबाद वॉरियर्स के लिए। दूसरी तरफ लाहौर हीरोज़ की टीम को प्लेटफॉर्म मिला है, वो बड़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर उठाकर खेल दिया लेग साइड की जानिब, फील्डर वहां पर मौजूद हैं और थोड़ा सा फंबल ज़रूर किया उन्होंने, लेकिन गेंद को जो है वो स्टॉप करने में कामयाब रहे। दोनों बैटर्स की कोशिश हमने देखा है कि थ्रू आउट द इनिंग्स यही रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रन हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये T10 फॉर्मेट है और इसमें आपकी कोशिश यही होती है कि जितना बेहतर अंदाज से हो सके आप रन बनाएं। जी बिल्कुल, एक बार फिर से रिजवान तैयार, अच्छा बॉल करवाया थे और स्ट्रेट की जानिब खेला जहां पर फील्डर मौजूद थे, आसानी से इसे फील्ड किया। 1 रन मिलेगा कामरान को। अच्छी बॉल थी ये, शॉर्ट पिच डिलीवरी करवाई थी और बॉलर के सर के ऊपर से ये बॉल क्रॉस करती हुई फील्डर के हाथों में गई और 1 रन मिला। इस तरह से डेंजरमैन दानियाल स्ट्राइक पर। एक बार फिर से गेंद हवा में, कोई फील्डर नीचे, और ये आसानी से कैच हासिल किया। तो इस तरह से डेंजरमैन को वापस जाना पड़ेगा। दानियाल 47 रन बनाने के बाद उनकी इनिंग्स का हुआ खात्मा, और रिजवान बड़ी अच्छी बॉल करवाई थी इस बार। दानियाल खेलना चाहते थे इसे और बड़ा ही आसानी से रिजवान ने कैच लिया, कॉट एंड बोल्ड। और ये विकेट बहुत ज़रूरी थी नौमान, क्योंकि अच्छी इनिंग्स इन्होंने खेली और 50 के करीब थे, लेकिन इन्हें रिस्ट्रिक्ट किया। जी हाँ बिल्कुल, इस गेंद को उठाकर खेलना चाह रहे थे मिड विकेट की जानिब, लेकिन सही तरह टाइम नहीं कर पाए, थोड़ा जल्दी खेल लिया। लेकिन दानियाल अरशद 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 27 गेंदों पे 47 रन बनाए और बड़ी उम्दा इनिंग्स खेलने के बाद अब पवेलियन जाते हुए, और इस तरह दूसरी विकेट का नुकसान उठाना पड़ा यहाँ पर लाहौर हीरोज़ को। रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर आप देख सकते हैं जगमगाती हुई लाइट्स और नए आने वाले बैट्समैन मुराद। बड़ी विकेट रिजवान ने हासिल की और 47 रन बनाने के बाद आउट हुए। ये विकेट बहुत ज़रूरी थी इस वक्त, क्योंकि सेट बैट्समैन थे, इन फॉर्म थे और उन्हें चलता किया पवेलियन की जानिब। नए बैट्समैन मुराद, 84 रन हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। रिजवान एक बार फिर से तैयार,
इस बार फिर से शॉट खेला लेग साइड की जानिब, फील्डर वहां पर मौजूद और आसानी से इसे फील्ड किया 1 रन के लिए। जी हाँ बिल्कुल, मुराद हैदर ने आने वाले बैट्समैन है और हम बात कर रहे थे चूंकि ये 10 ओवर का मैच है और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक शॉर्टर बाउंड्रीज हैं, तो यहाँ पर काफ़ी एडवांटेज हासिल किया दानियाल अरशद ने। 40-47 रन की बड़ी शानदार इनिंग खेली और अब चूंकि कामरान 13 गेंदों का सामना कर चुके हैं और अब इन पार्टनरशिप में एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं। ओवर की आखिरी गेंद करेंगे रिजवान, फिर चेंज ऑफ पेस से गेंद पड़ने के बाद बाहर की जानिब निकली और अंपायर ने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए, वाइट बॉल का सिग्नल किया। और रिजवान मेरे ख्याल स्टैंड आउट बॉलर रहेंगे क्योंकि जिस तरह शानदार गेंदबाजी उन्होंने की है, अगर जिनका रन अप काफ़ी स्मूथ है, हल्का भागते हैं, इतना तेज़ रन अप नहीं है, लेकिन उनकी एक्यूरेसी बड़ी शानदार रही है थ्रू आउट द स्पेल। तो फिर गेंद ऑफ स्टंप के बाद पड़ने के बाद तेज़ी से बाहर की जानिब निकली और काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं इस डॉट बॉल करने के बाद। और इसके साथ ही 7 ओवर्स का इख्तिताम। स्कोर बोर्ड पर मजबूरी स्कोर है लाहौर हीरोज़ का 86, 2 विकेट्स के नुकसान पर। सात ओवर्स के बाद मजमूई स्कोर है लाहौर हीरोज़ का 86, 2 विकेट्स के नुकसान पर। और मुराद हैदर नए आने वाले बल्लेबाज हैं, 1 रन के मजमूई स्कोर पर खेल रहे हैं। और यहाँ पर साइम मजीद कितने रन हासिल करने की कोशिश करेगी लाहौर हीरोज़ की टीम, क्योंकि सिर्फ 3 ओवर्स का खेल बाकी है। और यहाँ पर हमने देखा कि पिछले ओवर में कुछ रन का जो फ्लो है वो काफ़ी हद तक रुक गया था। जी बिल्कुल, 3 ओवर्स, आखिरी 3 ओवर्स आपको पता है कि तेज़ खेलने की कोशिश करेंगे और मैक्सिमम स्कोर 120 प्लस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन कंडीशंस में ये रन्स काफ़ी जो है डिफेंडेबल होगा और इसे डिफेंड भी इजीली कर सकते हैं। 85 रन्स बताया था उन्होंने कि डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पिच की जो कंडीशंस हैं, बैटिंग के लिए साजगार पिच है। आसिफ एक बार फिर से लिटिल बिट फंबल। और जी बिल्कुल, रन्स की बात कर रहे थे तो रावलपिंडी की आज जो पिच है बैटिंग के लिए साजगार ये पिच दिख रही है और 100 प्लस रन्स जाएगा और मेरे ख्याल से ये चेजेबल भी है। अगर इस बार शॉट खेली ऑफ साइड पर, फील्डर वहां पर मौजूद थे और 2 रन्स आसानी से मिलेंगे। मुराद हैदर एक बार फिर से स्ट्राइकिंग एंड पर। अगर हम बात करें इस इनिशिएटिव की, 5G प्रेजेंट्स DCL T10 लीग, और इसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग खेल रहे हैं, तो बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको कनेक्ट करके रखती है। आसिफ की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, इसको निकाल दिया पॉइंट की जानिब से और गेंद थर्ड मैन पर जा रही है और थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ, लेकिन गेंद को बाद में वो वापस रिकवर करने में कामयाब हुए। और मुराद हैदर, दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी शानदार कर रहे हैं ये दोनों बैट्समैन। चूँकि मौसम कदरे बेहतर है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत है रावलपिंडी में। आज बारिश के बाद जो ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन तारीफ़ करनी होगी इन दोनों बल्लेबाजों की कि जिस तरह रनिंग बिटवीन द विकेट्स बड़ी शानदार रखी हुई है इन्होंने। एक बार फिर से आउटसाइड ऑफ स्टंप पड़ी हुई बॉल, ऐसे खेला, फील्डर वहां पर मौजूद थे जैसे बड़ी आसानी से किया फील्ड और 1 रन के लिए। जी बिल्कुल नुमान, हम बात कर रहे थे इन सेलिब्रिटीज़ की। मैं खुद इन्हें टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखता हुआ, ड्रामाज में, मूवीज़ में देखते हुए हम इन्हें बड़े हुए हैं और ये क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आज क्रिकेट खेलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, तो ये काफ़ी हेल्दी एक्टिविटी है और दाद देनी पड़ेगी 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को। और इस बार बड़ी अच्छी शॉट खेली, कोई फील्डर वहां नहीं और गेंद एक टप्पा खाने के बाद गई बाउंड्री लाइन से बाहर। बड़ा अच्छा शॉट खेला था इसे। इसके साथ टूर्नामेंट फोर्स की तादाद हुई 8 और कामरान के बल्ले से निकला हुआ ये चौका। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं कामरान भी, चूँकि दानियाल के विकेट के बाद एक एंड संभाल के रखना था और जिस शानदार अंदाज से कामरान खेल रहे हैं, गेंद
शॉर्ट पिच बॉल था, इसको उठाकर खेल दिया लेग साइड की जानिब और मिड विकेट के एरिया में कोई फील्डर मौजूद नहीं था और गेंद एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। तो जो अच्छा ओवर कर रहे थे आसिफ, इस बाउंड्री ने इस स्पेल को ख़राब किया है। 9 रन दे चुके हैं अभी तक 4 गेंदों पे। और जिस तरह साइमा बात कर रहे थे कि इन तमाम सेलिब्रिटीज़ को देखकर टेलीविज़न स्क्रीन पर देख के आप बड़े हुए हैं, और बड़ी खुशाइंद बात है कि अपने मेन से एक्टिंग से हट के ये क्रिकेट की जानिब भी आ रहे हैं। बार उठाकर खेल दिया लेग साइड की जानिब और मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पास जाकर गिरी है 6 रन के लिए। तो कामरान अपनी शानदार बैटिंग का सिलसिला जारी रखते हुए, आगा शराज मिड विकेट पर मौजूद थे और उन्होंने सिग्नल किया कि गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर गई। तो कामरान अपनी शानदार बल्लेबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा शॉट खेला था, ये आप रिप्ले देख सकते हैं। एरियल रूट इस गेंद का, फील्डर मौजूद थे लेकिन आसान नहीं थी ये कैच, और गेंद बाउंड्री लाइन से गई बाहर और ये बड़ा खूबसूरत छक्का। एक बार फिर से और एक बार फिर से छक्का, डायरेक्ट गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर और अंपायर की कॉल देखनी पड़ेगी और अंपायर ने हाथ उठा दिए और टूर्नामेंट सिक्सेस की तादाद पहुंची 6। इसके साथ 8 ओवर्स का हुआ अख्ताम। रन्स 107, 2 विकेट के नुकसान पर। कामरान मौजूद हैं 40 रन पर, सिर्फ 17 गेंदें उन्होंने खेली हैं और एक प्रॉपर T10 के फॉर्मेट को बना के रखा है, एक उस प्रॉपर एंटरटेनमेंट को बनाया। ये रिप्ले आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत शॉट खेला था। फील्डर के लिए वहां पर इजी नहीं था, टीपू वहां पर थे और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर। इसी के साथ 8वें ओवर का हुआ अख्ताम। रन्स 107, 2 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में आसिफ ने 21 रन दिए थे और यही वो टाइम है जहां बॉलिंग साइड को इस गेम में कमबैक करना था, लेकिन ऐसा करने में अभी तक कामयाब नहीं दिखाई दे रही है इस्लामाबाद वॉरियर्स की टीम। 8 ओवर में अभी तक 107 रन दे चुके हैं और लाहौर हीरोज़, क्योंकि इनके पास काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, इस उम्दा आगाज़ को कैपिटलाइज कर रहे हैं। उठाकर खेलना चाह रहे थे इस गेंद को, इनसाइड एज हुआ और गेंद फाइन लेग पर बाउंड्री लाइन पार कर गई। तो थोड़ा सा यहाँ पर अनलकी रहे हैं ज़मान। गेंद बहुत अच्छी थी लेकिन अपने हक में नतीजा लेने में कामयाब नहीं हो सके। और मुराद ने इनिंग्स का आगाज़ काफ़ी स्लो किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा चार्ज लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ज़मान को एक बार फिर से लाया गया। ये रिप्ले देख सकते हैं, बॉल ने बैट का एज लिया और कीपर के लिए कोई मौका नहीं था और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर। तो इस तरह के शॉट्स और ऐसे निकले हुए रन्स काफ़ी महंगे साबित हो सकते हैं लास्ट टाइम पर, क्योंकि ये क्रिकेट है, बाई चांस गेम है। और एक बार फिर से ज़मान, अच्छी बॉल थी मगर उतना ही अच्छा शॉट था, फील्डर मौजूद नहीं और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर। बड़ा खूबसूरत शॉट खेला था, बॉल अच्छी थी और लेग स्टंप के ऊपर इस बॉल को डाला था, मगर मुराद ने उतना ही खूबसूरत शॉट खेला और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन से बाहर। ये आप रिप्ले एक बार फिर से देख सकते हैं। गुड लेंथ बॉल थी और इसे बड़ी खूबसूरती के साथ पनिश किया लेग साइड की जानिब और 4 रन के लिए गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार आगाज़ इस ओवर का मुराद के लिए कि स्कोर बढ़ते हुए 14 हो चुका है। मतलब फिर इनसाइड एज जहाँ पर गेंद को कनेक्ट करने में सही तरह कामयाब नहीं हो पाए थे और कोई फील्डर वहाँ पर मौजूद नहीं होगा। ये दोनों बैट्समैनों ने बड़ी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट की है मुराद की। अगर हम बात करें इन दोनों बल्लेबाजों की और ख़ास तौर पे इस टूर्नामेंट में शरीक तमाम खिलाड़ियों की, तो यकीनी तौर पर इन सेलिब्रिटीज़ और मुख्तलिफ लोगों के लिए इनका जो फिटनेस टेस्ट है वो भी होगा। और अगर हम मुराद की बात करें तो अभी तक तीसरी बार ऐसा हुआ है कि इनकी रनिंग बिटवीन द विकेट टेस्ट हुई है और उन्होंने तीनों मौक़ों पे जो है वो बड़ी शानदार रनिंग की है। तो बड़ी खुशाइंद बात है ये कि ये तमाम सेलिब्रिटीज़ जो हैं अपने आप को फिट भी रखे हुए हैं। ज़मान अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं और
और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रन्स कंसीड कर दिए अभी तक इस्लामाबाद वॉरियर्स की टीम ने, और फिर इस गेंद को उठाकर खेल दिया। लॉन्ग ऑन पर फील्डर इस गेंद को फील्ड करेंगे। कामरान और मुराद, बड़ी शानदार पार्टनरशिप रही है इन दोनों बैट्समैनों के दरमियान। जी बिल्कुल नौमान, महज एक ओवर रह गया है और एक ओवर 2 बॉल्स 118 रन्स बना चुके हैं। 120 क्रॉस करने के करीब हैं लाहौर हीरोज़ की टीम, और ये एक अच्छा टोटल है डिफेंड करने के लिए। जमान तैयार एक बार फिर से, इस बार बड़ा खूबसूरत शॉट खेला और कोई मौका नहीं फील्डर के लिए वहां पर, और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर। क्या खूबसूरत शॉट खेला था। और कामरान जिन्होंने शॉट खेला 46 रन्स पर पहुंच चुके हैं। महज 18 गेंदें उन्होंने फेस की हैं और 124 रन्स 2 विकेट्स के नुकसान पर, एक अच्छा टोटल नौमान। जी हाँ बिल्कुल, और जमान चुके बिल्कुल फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ दोनों फील्डर्स दायरे से बाहर हैं, लेकिन ये फिर भी शॉर्ट लेंथ और गुड लेंथ पर ही इत्तेफाक कर रहे हैं। इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं कामरान, जो मजमूई स्कोर 46 पे पहुंच चुके हैं। तो फिर फुलर बॉल थी, इस गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग ऑफ की जानिब, और एक ही रन पर इत्तेफाक करना पड़ेगा इन दोनों बैट्समैनों को। और इसी के साथ ही 9 ओवर्स का अख्ताम हुआ है। मजमूई स्कोर 125, लाहौर हीरोज़ 2 विकेट्स के नुकसान पर। फाइव जी प्रेजेंट्स DCL T10 लीग, और इस टूर्नामेंट का आज पहला मैच लाहौर हीरोज़ और इस्लामाबाद वॉरियर्स के दरमियान खेला जा रहा है। इस्लामाबाद वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा अभी तक, जहां 9 ओवर्स में उन्होंने 125 रन कंसीड कर लिए हैं। और लाहौर हीरोज़ की टीम यकीनी तौर पर हीरोज़ की तरह खेल रही है इस मैच में। पहले उनके कप्तान दानियाल अरशद और उसके बाद कामरान, दोनों ने बड़ी शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। इस बार इस गेंद को उठाकर खेल दिया, फील्डर वहां पर मौजूद थे आगा शिराज। गेंद आगा शिराज तक पहुंची और दोनों बैट्समैनों ने एक ही रन पर इत्तेफाक किया। 126 रन जो है वो स्कोर बोर्ड पर सजा चुकी है अभी तक लाहौर हीरोज़ की टीम। जी बिल्कुल, एक बार फिर से स्लोअर बॉल करवाई थी और इसे खेला फील्डर वहां पर मौजूद, मगर महज एक ही रन पर इत्तेफाक करेंगे। हम बात कर रहे थे रन्स की, तो 127 रन्स तक पहुंच चुके हैं महज 9.2 ओवर्स में, और दाद देनी पड़ेगी कामरान को जिन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की। 20 गेंदें उन्होंने फेस की और 48 रन बनाए, 50 के वो करीब हैं। और अरबाज की अच्छी गेंद थी ये, लास्ट बॉल स्लो बॉल करवाई थी, सिर्फ एक ही रन बना। और मुराद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद हैं अभी तक। आप फिटनेस की बात कर रहे थे एन आर्टिस्ट की, तो फिटनेस और डाइट ये बड़ी प्रॉपर रखते हैं अपनी, जैसे क्रिकेटर्स रखते हैं। अरबाज खान फिर से एक बार ऊंचा शॉट खेलना चाहते थे, मगर टीपू वहां पर फील्डर, एक रन मिला आसानी से। दसवें ओवर का खेल चल रहा है और अभी तक 129 स्कोरबोर्ड पर सजाने में कामयाब हुए। जी हाँ बिल्कुल, आप फिटनेस की बात कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स हो या शोबिज हो, आपको फिटनेस हर जगह अपनी ठीक रखनी है। मुराद ने इस गेंद को खेलना चाहा लेग साइड की जानिब और उसमें कामयाब हुए। मिड विकेट पर टीपू अब की बार इस गेंद को फील्ड करने में कामयाब नहीं हुए। तो मुराद की शानदार बल्लेबाजी का सिलसिला जारी है और यहाँ पर अपने मजमूई स्कोर को 22 तक ले गए हैं मुराद। बट फिर थोड़ा चेंज ऑफ पेस हमें दिखाई दिया है अरबाज का, क्योंकि नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में जब आपको बचना होता है तो आप थोड़ा स्लोअर बॉल की तरफ आते हैं, क्योंकि जिस शानदार अंदाज से इस विकेट पर गेंद बैट पर आ रहा है।
मरतबा फिर हीव किया लेग साइड की जानिब, और अब की बार टीपू, लेकिन अब की बार भी बस गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हुए। तो बैक टू बैक बाउंड्रीज यहाँ पर लाहौर हीरोज के लिए। जी बिल्कुल नौमान, अच्छी शॉट खेली थी अभी स्क्वायर लेग के जानिब, टीपू वहां पर मौजूद थे लेकिन फील्ड नहीं कर पाए और गेंद निकल गई उनके पास से 4 रन के लिए। तो इसी के साथ मुराद पहुंच चुके हैं 26 रन पर और महज 2 गेंदें बाकी हैं। नौमान और कामरान 49 पे नॉट आउट हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि अपनी 50 मुकम्मल कर पाएंगे? देखिए मुराद को बेहतर है कि अपनी टीम के लिए खेलना चाहिए, बिकॉज आखिरी 2 गेंदें हैं और इसमें इनकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन्स अपनी टीम के लिए हासिल कर सकें उतना बेहतर होगा लाहौर हीरोज़ के लिए। अरबाज खान अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं, बाहर सीधे बल्ले के साथ खेला खूबसूरती से और फील्डर मौजूद, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया है, एक ही रन हासिल करने में कामयाब होंगे। जिस तरह साइम बात कर रहे थे कि कामरान को अपनी सेंचुरी मुकम्मल करनी चाहिए, तो इनिंग्स की आखिरी गेंद का सामना करेंगे कामरान, जो कि 49 के मजमूई स्कोर पर बारी कर रहे हैं। बिल्कुल लास्ट बॉल थी और इसे फ्लिक किया, गेंद की बाउंड्री लाइन से बाहर, और क्या खूबसूरत शॉट खेला। इसी के साथ साथ अपनी 50 भी की मुकम्मल और सिंगल डबल से नहीं बल्कि एक मैक्सिमम के साथ अपने स्कोर को पहुंचाया 55 नॉट आउट में और अपनी टीम का रन पहुंचाया 144 फॉर 2, 144 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा टोटल सेट करने में लाहौर हीरोज की टीम हुई कामयाब और 145 रन का टारगेट दिया है इस्लामाबाद वॉरियर्स को इस मैच को जीतने के लिए। शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर कामरान की जानिब से, जिन्होंने इस इनिंग्स का बहुत उम्दा अंदाज से इख्तिताम किया। इनिंग्स का जो आगाज़ था वो दानियाल की अच्छी बारी के सबब हुआ था और जो इनिंग्स का इख्तिताम है वो कामरान की शानदार हाफ सेंचुरी के बाद हुआ। तो 144 रन स्कोर बोर्ड पर सजाने में कामयाब हुई है इस्लामाबाद वॉरियर्स की टीम, और इस्लामाबाद वॉरियर्स के खिलाफ लाहौर हीरोज़ की टीम और थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर लो ऑन कॉन्फिडेंस लग रहे हैं इस्लामाबाद वॉरियर्स के खिलाड़ी। इनके कप्तान मोहम्मद राना के खिलाड़ियों को हौसला बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं और 144 रन स्कोर बोर्ड पर सजाए हैं लाहौर हीरोज़ ने, जिन्हें टॉस जीत कर बैटिंग की दावत दी गई थी इस्लामाबाद वॉरियर्स की जानिब से। काफ़ी बेहतर स्कोर है क्योंकि बाउंड्रीज छोटी हैं और T10 फॉर्मेट है, यकीनी तौर पर एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग क्रिकेट होती है। और अगर हम बैटिंग की बात करें लाहौर हीरोज़ की, तो दानियाल अरशद 27 गेंदों पे 47 रन बनाए और इसके बाद हैदर रजा सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए, जबकि उसके बाद कामरान खान ने शानदार निफ सेंचुरी स्कोर की 22 गेंदों पे और मुराद हैदर ने 12 गेंदों पे 27 रन बनाए। 10 ओवर्स में 14 एक्स्ट्रास के साथ 144 रन स्कोर बोर्ड पे सजाए हैं लाहौर हीरोज़ की टीम ने। जी बिल्कुल, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, बैटिंग परफॉर्मेंस, और इसी के साथ साथ ग्राउंड स्टाफ को दाद देनी पड़ेगी। ये हाइलाइट्स आप देख सकते हैं और बोल्ड किया था, बड़ी अच्छी गेंद थी। उसके बाद ये आउटसाइड ऑफ स्टंप पड़ी बॉल जैसे खेला और गेंद की बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। फिर एक बार अच्छा शॉट खेला था लेग साइड की जानिब, फिर से चौका और एक बार फिर से फ्लिक किया था इस गेंद को। फील्डर मौजूद नहीं थे वहाँ पर भी, ये एज लगा था, बॉल कीपर के पास से निकल गई थी 4 रन के लिए। इस बार ये बड़ा अच्छा शॉट खेला था, इस छक्के की दाद देनी पड़ेगी। और 2 बैक टू बैक ये जो मैक्सिमम्स लगाए थे, ये फिर से आप एक शॉट देख सकते हैं और इस शॉट को भेजा स्ट्रेट बाउंड्री से बाहर, आउटसाइड ऑफ स्टंप पड़ी बॉल और इसे एक बार फिर से डाउन द ग्राउंड। पहली इनिंग की खास बात रही दानियाल और कामरान की बैटिंग। हम देख सकते हैं कि जिस तरह दानियाल ने ग्राउंड के चारों जानिब शानदार स्ट्रोक्स लगाए और उनकी इनिंग्स की खास बात उनके जो छक्के थे उन्होंने बिल्कुल बेहतर अंदाज से लगाए। रिजवान अली ने विकेट हासिल की थी दानियाल की और उसके बाद कामरान ने 55 रन की शानदार इनिंग्स खेली और उन्होंने भी जो है वो किसी बॉलर को खातिर में नहीं लेकर आए। लेग साइड का एरिया उनका फेवरेट रहा और उन्होंने जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो बॉलर्स की बॉलिंग को बिल्कुल खातिर में नहीं लेकर आए और 3 छक्के जो एक ओवर में उन्होंने लगाए, उसके बाद जो इनिंग्स का मोमेंटम था वो मज़ीद लाहौर की टीम के हक में गया। और यहाँ पर अगर हम बॉलिंग की बात करें
बॉलिंग की बात करें, आप देख सकते हैं साद रशीद इन्होंने 2 ओवर्स करवाए, 15 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। इसके साथ साथ जमान खान जिन्होंने 2 ओवर्स करवाए, 32 रन दिए, काफ़ी ये महंगे रहे और कोई विकेट नहीं हासिल की 16 की इकॉनमी के साथ। इसके साथ साथ रिजवान अली ने 2 ओवर्स करवाए, अच्छे ओवर्स करवाए, 13 रन दिए और 6.50 6.50 इनकी इकॉनमी रही, 1 विकेट हासिल की। और इसके साथ साथ अरबाज खान, आगा शराज और आसिफ अली कोई विकेट्स नहीं ले पाए। और इसी के साथ साथ 144 रन का मजमुआ खड़ा किया, एक पहाड़ जैसा टोटल इस T10 फॉर्मेट में, और इसे चेस करना पड़ेगा। 145 रन चाहिए इस्लामाबाद वॉरियर्स को इस मैच को जीतने के लिए। तो एक पहाड़ जैसा टोटल है, मुश्किल दिख रहा है। जी हाँ बिल्कुल, टॉस जीतकर बैटिंग की दावत दी थी लाहौर हीरोज़ को और उन्होंने 144 रन स्कोर बोर्ड पर सजाए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और कुछ ही देर में दूसरी इनिंग्स के खेल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। This TCL T10 is brought to you by T Concepts and 5G Group of Companies. It's all about real estate.
This TCL T10 is brought to you by T Concepts and 5G Group of Companies. It's all about real estate. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आप सबको पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में, जहां पर लाहौर हीरोज़ ने अब तक किए मार्का मारा 144 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे किए। और प्लेयर अगर हम पिक करें इन दोनों में से, बैटर्स तो 55 रन 22 बॉलों पे इनिंग खेली शानदार धुआंधार कामरान खान ने, 47 रन बनाए दानियाल अरशद ने द टॉप 27 बॉलों में, जो कि काफ़ी फ़र्क है इस पूरी इनिंग में। 27 रन जोड़े 12 बॉलों में और अच्छा फिनिश किया इस इनिंग को। उसके बाद इकॉनमी जो बॉलर्स की है काफ़ी ऊपर रही, सिर्फ 2 विकेट शेयर किए यहाँ पर साद रशीद और रिजवान अली ने। उसके साथ कोई भी बॉलर जो है वो को बेहतर कारकर्दगी ना दिखा पाया। और जो सबसे कहना चाहिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ के रन्स जो हैं वो आप देखिए 15, 32, 13, 36, ये वो चीज़ है जो T10 में सबसे ज़्यादा मार देती है एक बॉलर की इकॉनमी को। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि तमाम प्लेयर्स रेडी हैं और इस पहले मैच के लिए। और किसी भी इवेंट का जो पहला मैच है वो बहुत अहमियत रखता है। इस्लामाबाद वॉरियर्स वर्सेस लाहौर हीरोज़, और जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त डांसिंग ऑल अराउंड। और यही वो खूबसूरती है इस T10 क्रिकेट की कि जहाँ पर आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी, म्यूज़िक, क्रिकेट, सिंगिंग, जो चीज़ आप चाहेंगे। क्रिकेट इतनी रिफॉर्म हो चुकी, और यह है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में नया सेटअप जहां पर अब ये मीडिया बॉक्स है। पुराना सेटअप ख़त्म हो चुका और पिंडी की जो लुक है वो बहुत बेहतर हो गई, इम्प्रूव। और हम देख रहे हैं कि लाहौर हीरोज काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं अपने इस टोटल से। उनके ज़बरदस्त से डांस मूव्स और उनकी बॉडी लैंग्वेज हमें ये बता रही है कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं इस टोटल के साथ, और पूरी तैयारी से ग्राउंड में उतर रहे हैं सेकंड इनिंग्स के लिए। हिजाब इसकी मैं बात कर रहा था, ये वो नया सेटअप है जो कि मीडिया बॉक्स बनाया गया यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। और उसके साथ साथ अब जो चेयरमैन है रमीज़ राजा साहब, उन्होंने कहा कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की जो अपग्रेडेशन है वो भी की जाएगी। यहाँ पर जो कुर्सियाँ हैं वो नई लगाई जाएंगी, लेकिन उससे पहले अब ये T10 का एक खूबसूरत मेला यहाँ पर सजा है। पहला मैच इसका इस वक्त रवा दवा, एक इनिंग हो चुकी है, 145 रन चाहिए इस्लामाबाद वॉरियर्स को, और काफ़ी तगड़ा खेलना होगा, अच्छा तेज़ शुरुआत करनी होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ग्राउंड की जो बाउंड्रीज हैं वो शॉर्ट हैं। बॉलर्स अगर थोड़ा सा पीछे बॉल रखते हैं, बैक ऑफ लेंथ या शॉर्ट पिच, अगर लैक ऑफ पेस है तो उन्हें बहुत बहुत पिटाई होती है उनकी। तो काफ़ी कुछ पहली इनिंग में देख चुके यहाँ पर ये लाहौर के सितारे। तो अब देखना है कि किस तरीके से वो अब अपने बॉलर्स को यूटिलाइज करते हैं। फ्लड लाइट्स ऑन हो चुकी हैं पिंडी में, और अगर आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर यहाँ पर हमें देख रहे हैं तो आपको बताते चलें कि ये DCL डी कॉन्सेप्ट सेलिब्रिटी लीग है जो कि T10 फॉर्मेट में खेली जा रही है। और कमरान ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली। इनफैक्ट अगर हम जितनी भी तारीफ़ करें वो कम है कि कमरान की जो बैटिंग थी, जिस वक्त वो आए, थोड़ा सा स्लो स्टार्ट ज़रूर किया उन्होंने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी इनिंग को बिल्टअप किया। देखिए बैक ऑफ लेंथ बॉल था, इसको खेल दिया एक्स्ट्रा, इनफैक्ट थर्ड मैन की जानिब। उसके बाद ऑन साइड पे भी उनके जो शॉट्स थे वो अच्छे थे, तमाम वैराइटीज़ ऑफ स्ट्रोक्स अवेलेबल थे। बिल्कुल एक स्लो स्टार्ट के बाद कामरान खान ने अपनी क्लास दिखाई। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी उन्होंने जहां पर उन्होंने पनिश नहीं किया इस्लामाबाद वॉरियर्स के बॉलर्स को। और एक स्लो स्टार्ट के बाद उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सेलरेट किया अपनी इनिंग्स को, और आखिर तक खड़े रहे अपनी टीम लाहौर हीरोज के लिए। और देखिए जितने भी स्ट्रोक्स खेले उन्होंने ऑन साइड पे, जिससे ये पता लगता है कि ऑन साइड के काफ़ी अच्छे तगड़े प्लेयर हैं। और उसके साथ साथ जो बॉलर्स थे उन्होंने भी उनको बनाकर दी बॉलें कि आप जितना अच्छा उन्हें बनाकर खेल सकते हैं वो खेलिए। दोनों अंपायर इस वक्त तैयार हैं दूसरी इनिंग की शुरुआत के लिए।
प्लेयर्स भी इस वक्त तैयार हैं डिफेंड करने के लिए, क्योंकि लाहौर ने जिस अंदाज से बैटिंग की, बहुत कुछ दिया अपने बॉलर्स के लिए ताकि वो डिफेंड कर सकें। और अंपायर्स यहाँ रेडी हैं सेकेंड इनिंग्स के लिए। वो T10 ऐसी क्रिकेट है जिसमें आपको शुरुआत से ही बिल्कुल धीमा नहीं खेलना पड़ेगा, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा लेजी हुए तो बॉलर आप पे चढ़ जाएगा और आपको इतना आसान नहीं होगा खेलना। गो के पहले भी ये बात कर चुके हैं कि बाउंड्रीज जो हैं वो थोड़ी सी छोटी हैं। एक अच्छी मिडल की हुई बॉल आसानी के साथ ट्रैवल कर सकती है डिस्टेंस की जानिब। सलीम शेख कामरान के साथ बातें करते हुए। बिल्कुल हमने देखा जैसे दानियाल अरशद और कामरान खान ने बहुत अच्छे से गैप्स ढूंढे फील्डिंग के अंदर और बहुत अच्छी अच्छी शॉट्स खेली और फुली डोमिनेट किया इस्लामाबाद वॉरियर्स के बॉलर्स को शुरू से लेकर आखिर तक। और ऐसी ही एक शानदार इनिंग्स की ज़रूरत है इस्लामाबाद वॉरियर्स को। और अब देखना यह है कि उनमें से कौन जो है इस तरह की एक शानदार बारी खेलता है। जी हाँ, तेज़ पारी और शुरुआत से ही तेज़ खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप थोड़े से भी लेजी हुए तो आपका जो रन रेट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। उस रन रेट को बरकरार रखना है, इन चेक रखना है इनफैक्ट, क्योंकि 145 रन आप नॉर्मल क्रिकेट में अगर देखें 10 ओवर्स में तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ये सेकेंड इनिंग्स की बारी है, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं, लेकिन 145 रन का टारगेट, 145 रन का हदफ एक अच्छा खासा पहाड़ है इस्लामाबाद वॉरियर्स के आगे इस वक्त जिसको उन्होंने सर करना है। और इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त करीब है कि दूसरी इनिंग शुरू हो। 145 चूँकि इस वेन्यू पे बना तो इसका मतलब है कि इस वेन्यू पे जो आने वाले बल्लेबाज हैं वो भी बना सकते हैं वॉचफुली। यहाँ पर आप इंजरीज अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये अनइंटेंशनली हुआ, देखा नहीं उन्होंने अपने साथी प्लेयर को आते हुए। एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद है इन दोनों खिलाड़ियों से, क्योंकि जिस अंदाज से हम इन सितारों को देखते हैं जगमगाते हुए टीवी पे, छोटी या बड़ी स्क्रीन्स पे, उसी तरीके से यहाँ पर जो क्रिकेट स्किल्स हैं इनकी, आज वो जांचने का दिन है। और अब तक काफ़ी बेहतर रहा। एक वक्त था ऐसा लग रहा था कि कल की अगर हम बात करें या परसों की, 1-2 दिन पहले की, तो पिंडी का मौसम काफ़ी ह्यूमिड था, गर्म था, धूप की वजह से जो गर्मी थी वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। लेकिन आज जो बारिश हुई उसके बाद काफ़ी टेम्परेचर जो है वो गिरा, और उसके साथ साथ इस क्रिकेट T10 का जो मेला है वो भी बेहतर अंदाज में शुरू हुआ। तो प्लेयर्स काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हैं उनके फेसेस से कि काफ़ी इस वक्त मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। और इस्लामाबाद वॉरियर्स की तरफ से जो दो बल्लेबाज इस वक्त उतरे हैं मैदान में वो हैं आसिफ अली और जैन बेग, जो कि अपनी टीम को, इस्लामाबाद वॉरियर्स को एक अच्छा और तगड़ा स्टार्ट देने के ख्वाहिशमंद होंगे। देखना यह है कि गेंदबाजी के लिए कौन आता है। क्या ख्याल है आपका एजाज? वेल मेरे ख्याल से तो नॉर्मली ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात आप अगली टीम को डिसीव करना चाहते हैं कि बजाय इसके कि पेसर से आप स्पिनर से जो है वो बॉल करवा दें। लेकिन दानियाल दूसरी जानिब काफ़ी मंजे हुए खिलाड़ी हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है इनका क्रिकेट में, लाहौर में काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं। और मेरा ख्याल है कोई भी वीकेंड ऐसा नहीं होता कि जहाँ पर दानियाल अपनी टीम को ले जाकर किसी भी पार्क में जो कि अपोनेंट टीम के साथ एक अच्छा तगड़ा मुकाबला ना करते हो। बिल्कुल, और जब आप इतनी क्रिकेट खेलते हैं तो आपको हर चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है, पिच का, गेंद का, मौसम का, आउटफील्ड का। तो देखना यह है कि लाहौर हीरोज़ किस तरह डोमिनेट करते हैं इस सेकेंड इनिंग्स में। उनकी शुरुआत बड़ी स्लो थी अपनी पहली इनिंग्स के अंदर, लेकिन अगले 5 ओवरों में उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट और अपना रन रेट इतना बढ़ा लिया कि 145 रन का बड़ा पहाड़ जैसा हदफ रख दिया इस्लामाबाद वॉरियर्स के सामने। इस्लामाबाद के दोनों बल्लेबाज इस वक्त तैयार होते हुए। वेल कोई भी इस वक्त साथ देने को तैयार नहीं, बड़ी दूर से अपने साथी प्लेयर को बुलाया। नॉर्मली ऐसा होता है कि आप कैप उल्टी करके पहन लें, ये फेस्टिवल गेम है, लेकिन लगता यही है कि काफ़ी अच्छा शैम्पू इस्तेमाल किया। अपने जो बाल हैं वो आप देखते हैं अक्सर शाहिद आफरीदी को भी
बाउंस करते हुए उनके बॉल जो है वो आते हैं बॉलिंग करवाते वक्त। तो यहाँ पर लग यही रहा है कि अपने बॉलों के भी दिखावा जो है वो करना चाहते हैं और काफ़ी अच्छे घने बाल हैं। और जी, अब देखना यह है कि किस तरीके से बॉलिंग में अपना इफेक्ट दिखाएंगे। जी, लाहौर हीरोज के लिए वजी हसन जो है वो बॉलिंग स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि हम स्पिन से स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, नॉर्मली ऐसा होता है कि कप्तान जो है वो रिसीव करना चाहते हैं ओपनर्स को कि बाज़ औक़ात तैयारी करके आए होते हैं पेसर्स के साथ। पहला बॉल इस दूसरी इनिंग का और वो भी एक्स्ट्रा से शुरू हुआ। वैसे नॉर्मली इस तर्ज की क्रिकेट में, बल्कि एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट, हम देखते हैं कि बॉलर्स थोड़ा सा लूजनर फेंकते हैं पहला बॉल जज करने के लिए बैटर को भी। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सेंसिबल खेला जैन ने, अपनी जगह पर खड़े रहे, पीछे रूम नहीं बनाया। और ये जैन ने कोशिश की स्वीप करने की और इसमें कामयाब रहे और बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर। पहली बाउंड्री इस्लामाबाद वॉरियर्स के लिए। और बहुत ही उम्दा। और स्वीप जो है ये बहुत बड़ा हथियार होता है किसी भी स्पिन के अगेंस्ट खेलने के लिए, क्योंकि अभी जब भी आप किसी भी स्पिन के अगेंस्ट खेलेंगे तो जब तक आप स्वीप नहीं खेलेंगे प्रोडक्टिव नहीं होगा। और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये शॉट खेली है और उनको इसका नतीजा भी वही मिला जो वो चाहते थे और उन्होंने अपना खाता खोला एक चौके से। जो एक्यूरेट होना पड़ेगा अर्लियर ऑन, अदरवाइज इस तरह के जो ऑन साइड पे पड़े हुए बॉल हैं उनको डिस्पैच करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए ऑफ साइड पे बॉल पड़ा, थोड़ा सा मुश्किल जरूर हुआ इस बॉल को खेलते हुए जैन को। वजी काफी तेजी से अपने बॉलिंग मार्क पे पहुंचते हैं और लगता है यही है कि उनकी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द जो है वो अपने ओवर को खत्म करें। तेजी से रन बनाया, डायरेक्ट हिट हो सकती थी, काफी खतरनाक, लेकिन डायरेक्ट हिट लगी नहीं जिसकी वजह से सरवाइव किया। और ये बेहतर क्रिकेट है कि जिस वक्त आपको चौका मिला उसके फौरन बाद आप सिंगल हासिल कीजिए। जी बिल्कुल, जैन बहुत अच्छा एक मुजाहरा कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड का और गेम अवेयरनेस का। और अच्छी कोशिश थी फील्डर की, डायरेक्ट हिट होती तो ये काफी क्लोज हो सकता था। काफी क्लोज बॉल था, विकेट के पास इनफैक्ट इसको पिच किया। और ये बेहतर लाइन है किसी भी ओपनिंग बल्लेबाज के लिए कि जिस वक्त आप उसको अनसर्टेनिटी के करीब रखते हैं ये बॉल ऑफ स्टंप के। देखिए वो लेट कट करने गए थे, जज किया उन्होंने बॉल की हाइट को, लेकिन प्रॉपर्ली उसको कनेक्ट नहीं कर पाए। हल्का सा फ्लिक कर दिया लेग साइड के ऊपर एक सिंगल के लिए। वो बेहतर है कि अगर आप पहला ओवर इस तरीके से खेलें, क्योंकि ऑलरेडी आप तकरीबन 10 ओवर से ज़ायद, क्योंकि जो एक्स्ट्राज हुए उनको भी मिलाएं तो तकरीबन 12-13 ओवर खेल चुकी है एक इनिंग में टीम। तो आइडिया हो जाता है कि ये बेहतर बाउंस है इस विकेट में। काफ़ी क्लोज हो सकता है, अंपायर की जानिब से डिसीजन। वजी की तरफ से एक जोरदार चीख एलबीडब्ल्यू के लिए, लेकिन अंपायर इंटरेस्टेड नजर नहीं आए बिल्कुल भी। और इसी के साथ पहले ओवर का इख्तिताम होता है। इस्लामाबाद वॉरियर्स 8 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। अब तक 8 रन बने पहले ओवर में। सेंसिबल स्टार्ट है, लेकिन अब थोड़े से जो शैकल्स हैं उनको तोड़ना होगा, क्योंकि इस ओवर में
दोनों ओपनर्स की जानिब से बड़ी हिट्स लगानी होंगी आसिफ और जैन की जानिब से, चूँकि अगर यहाँ पर 1 या 2 ओवर और डॉट जाते हैं या कम रन्स बनते हैं, लाइक 7-8 रन्स बनते हैं एक एक ओवर में, तो आप पे प्रेशर काफ़ी आता है एज अ बैटिंग यूनिट, क्योंकि बॉलर्स की तो इस वक्त ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉट बॉल फेंकें, कि अगर 6 में से 3 डॉट भी जाते हैं, और कोशिश यही होगी कि अगर विकेट ना भी गिरे, अगर 3 डॉट मिलते हैं तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी एक ओवर में, क्योंकि ऑलरेडी आप 3 डॉट हासिल करेंगे, प्रेशर बैटिंग पे आएगा, नए एरिया सेलेक्ट होंगे शॉट्स खेलने के लिए, बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं बल्लेबाज। जी बिल्कुल एजाज। और लाहौर हीरोज की तरफ से जो अगले गेंदबाज हैं वो हैं मोहसिन अवान। और ये उठा के खेल दिया लेग साइड की तरफ और मिलेगा इनको एक और चौका। जैन की एक शानदार शॉट और एक बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंस का मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त जैन बेग, और उन्होंने लेग साइड की तरफ उठाकर खेल दिया है एक चौके के लिए। पहली ही बॉल ओवर की और उस पर चौका। एक्सीलेंट, ये होता है वेलकम। देखें थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ था, अर्ली इसको देखा और खेल दिया ऑन साइड पे, और ये बेहतर है कि जिस वक्त आपके पास गैप्स अवेलेबल हैं आप उन्हीं को प्रॉपर्ली अवेल करें। और इस ओवर में 2 बाउंड्रीज और चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पिछले ओवर में काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट आ चुका रन्स और बॉल्स रिक्वायर्ड का, तो यहाँ पर अब इस्लामाबाद को थोड़ा सा मोर एग्रेसिव अटैक करना पड़ेगा। प्लेसमेंट बहुत खूबसूरत, इसको कहते हैं क्रिकेटिंग माइंड, बहुत ही उम्दा खेला। निहायत ही खूबसूरत शॉट, इंतजार किया गेंद का और उसको प्लेस किया परफेक्टली, और इसके नतीजे में 4 रन्स। और जैन बेग इस वक्त फुल स्विंग में नजर आ रहे हैं, और ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए होगा इस्लामाबाद वॉरियर्स को अगर उनको 145 जैसा हदफ जो है वो हासिल करना है। एक्सीलेंट प्लेसमेंट, बहुत ही उम्दा। एक बार फिर उन्होंने ऑफ साइड पे रूम बनाया, लंबा था आपको बेशक फील्डर के लिए, अच्छा प्रोटेक्ट किया बाउंड्री को। और ये बेहतर होता है कि जिस वक्त आप स्लाइड कर जाएं, क्योंकि बाज़ का जिस वक्त आप अपने पाँव से इस तरह से बॉल को रोकते हैं तो बहुत ज़्यादा इंजरी होने का ख़तरा होता है। लेकिन अच्छा फुटवर्क, 18 रन हो चुके हैं, एक चौका और होना चाहिए अगली 3 बॉलों में, ताकि लगभग इस ओवर का जो अख्ताम है वो 25-26 पे करना चाहिए इस्लामाबाद को, ताकि उनका जो ग्राफ है रन रेट का वो अप हो। बिल्कुल इस्लामाबाद चाहेगा कि इस ओवर को एक बहुत बड़े ओवर में तब्दील करे। बहुत ही उम्दा शॉट, एक्सीलेंट प्लेसमेंट, टाइमिंग खूबसूरत थी, और सबसे बढ़कर 4 रन्स मिले इस पे, और बिल्कुल अच्छे दिमाग के साथ खेल रहे हैं, क्लियर माइंड कि हमें इस ओवर में 2-3 बाउंड्रीज चाहिए। और जैन बेग का ऑन स्लॉट जारी है इस वक्त मोहसिन अवान के ऊपर और लाहौर हीरोज के ऊपर। ये तीसरा चौका इस ओवर का, और इसी के साथ जैन पहुंच गए 20 रन पे सिर्फ 8 गेंदों पर। देखिए फील्डर के काफ़ी करीब था, और बैकफुट पॉइंट का जो फील्डिंग पोजीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑफ स्टंप के बिल्कुल सामने थे, और इस तरीके से अंपायर ने इनको आउट करार दिया। बहुत बड़ी विकेट है ये लाहौर हीरोज के लिए, और बहुत बड़ा लॉस इस्लामाबाद वॉरियर्स के लिए। जैन बेग बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे थे, बहुत उम्दा शॉट्स खेल रहे थे, लेकिन ट्रैप हुए मोहसिन अवान की बॉल पर, और अंपायर का इशारा, अंपायर की उंगली उठ गई। ऑफ स्टंप पे थोड़ा सा शफल जरूर किया था, देखिए क्लिप कर रही थी ये बॉल ऑफ स्टंप को, क्योंकि जिस वक्त वो ऑफ स्टंप पे शफल करके गए और बता भी रहे थे अंपायर को कि मैं काफ़ी ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर था, तो यूं मिर्जा जैन बेग 20 रन बनाकर आउट हुए 9 बॉलों में, और इस्लामाबाद को पहला झटका 22 रन पर।
इस्लामाबाद वॉरियर्स ने अपनी पहली विकेट खोई दूसरे ही ओवर में 22 रन्स के ऊपर, और अब उनके बल्लेबाज आगा शराज पिच पर वॉक कर रहे हैं। कोशिश यही होगी आगा शराज की कि अपनी टीम को संभाल सके और यहां पर एक अच्छा स्टार्ट दे सकें। आगा शिराज अभी रिसेंटली इनको इस्लामाबाद शिफ्ट होते हुए देखा और काफ़ी जल्दी यहाँ पर इन्होंने, चूँकि स्टार्स जहाँ पे भी जाता है वहाँ पर अपनी अपनी दोस्तियाँ गहरी करता जाता है, और आगा शिराज की पर्सनालिटी भी ऐसी है कि जहाँ पर जाते हैं दोस्त बनाते हैं, और लगता यही है कि ये जो इस्लामाबाद है उनके सईद अनवर हैं। ये तो अब हमें देखना होगा। शाउट था यहाँ पर लेग बिफोर का, लेकिन अंपायर ने कहा कि नॉट आउट। और कराची में भी आगा शिराज ने काफ़ी अच्छी लंबी क्रिकेट खेली, अपना कैरियर काफ़ी वहाँ पर उन्होंने स्पेंड किया दौर। इसके साथ 2 ओवर का इख्तिताम हुआ, 22 रन इस्लामाबाद वॉरियर्स एक खिलाड़ी के नुकसान पर। इस वक्त कोशिश यही है कि याहू शॉट्स लगाए जाएं, और नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी इस तरह के बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश करते हैं बल्लेबाज, तो अगर अच्छी टाइमिंग ना हो तो कहीं ना कहीं उनका कैच निकलता है, ड्रैग ऑन होते हैं, विकेट खोते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी फॉर्म में, अच्छे निक में हैं, तो जब बल्ले से बॉल लगती है तो उसका एक अच्छा सॉलिड नॉइस निकलता है, आवाज़ निकलती है। और इजाज़ हमने देखा कि मोहसिन ने पिछले ओवर में काफ़ी अच्छी रिकवरी की अपनी आखिरी 2 गेंदों के ऊपर। अब देखना यह है कि जो आपके नए गेंदबाज हैं मुराद, वो क्या करते हैं। आगा शिराज इस वक्त उनको फेस कर रहे हैं। ऑन साइड पे अभी फिलहाल लगता है यही है कि जैन के आउट होने के बाद जो रन फ्लो है वो रुका है इस्लामाबाद वॉरियर्स का, क्योंकि जिस वक्त तक वो क्रीज पर थे चौके जो है वो आसानी के साथ, छक्के भी आसानी के साथ आ रहे थे, और जो स्कोर बोर्ड होता है वो हमेशा चलता रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप स्कोर बोर्ड रुकता है जो अल्टीमेट प्रेशर है वो बैटिंग लाइन पे आता है। ऑन साइड पे खेलने गए थे लेकिन मिस क्यों किया। इस्लामाबाद की कोशिश तो यही होगी कि हर बॉल को बाउंड्री के पार किया जाए, लेकिन इस वक्त उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है बॉल को पूरी तरह से खेलने में। आसिफ अली ने अब तक सिर्फ 3 गेंदों का सामना किया है, और ये लेग साइड पर उठाकर खेल दिया खूबसूरती से, और बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रन्स के लिए। जी हाँ, यही वो प्रेशर है जिसको ऑफ रखना है या रन्स को कंटेन रखना है एज अ बॉलर। लेकिन दूसरी जानिब बैटर की भी ये जॉब है, ये ड्यूटी है कि इस फ्लो को बरकरार रखे। देखें थोड़ा सा आगे पड़ा हुआ बॉल, और आगा ने बड़ा अच्छा पिक किया इसको बॉल के पीछे, और कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल, लॉन्ग लेग बाउंड्री की जानिब 4 रन हासिल किए। बस अब तक हमने जितने भी प्लेयर्स देखे हैं, इवन अगर हम लाहौर की बैटिंग की बात करें या इस्लामाबाद की, तो ऑन साइड के अच्छे प्लेयर हैं। ये बॉल हवा में तैरता हुआ 6 रन के लिए, डिस्टेंस अच्छा था, टाइमिंग अच्छी थी, और रिजल्ट भी अच्छा मिला। जबरदस्त एग्जीक्यूशन, और आगा शिराज अपना माइंड बना कर आए हैं कि उन्होंने क्या रोल प्ले करना है इस चेज में, और फिलहाल वो अपनी एग्जीक्यूशन में बिल्कुल कामयाब हुए हैं।
जबरदस्त डाउन द ग्राउंड सिक्सर। और यही चाहिए क्योंकि वन ऑफ दीज बैटर्स इन्हें चांस लेना होगा। हमने देखा कि एक आध ओवर पहले रन फ्लो जो है वो बेहतर नहीं था, स्कोरबोर्ड रुका हुआ था। इस अच्छे रन रेट की वजह से जो प्रेशर है वो ऑफ हुआ इन दोनों बैटर्स के ऊपर से। और अभी भी ऑन साइड का जो मिड विकेट का एरिया वो खाली है। ये वो जगह है जहाँ पर ये बॉल निकाला मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान से 4 रन्स के लिए। तो आगा का जो दिमाग है वो तो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है। और थोड़ी हवाएं बदलती हुई नजर आ रही हैं हमें पिछली 2 से 3 गेंदों में। चौका, छक्का और एक और चौका, और आगा शराज इसी तरह बैटिंग करते रहे तो इस्लामाबाद ये हदफ बहुत जल्दी पार कर जाएगा। 39 1 के नुकसान पे 3 ओवर्स के बाद। इस वक्त 3 ओवर्स के इख्तिताम पर और ये हवा में गेंद और नहीं पकड़ सके। 2 फील्डर्स के बीच में गेंद गिर गई जाकर और उसको नहीं कैच कर सके। इस मौके का फायदा नहीं उठा सके। कोशिश की आगा शराज ने रन लेने की, लेकिन वो भी नहीं ले सके, उनको वापस आना पड़ा। कल काफ़ी देर तक बॉल हवा में रही और ये होता है कि जिस तक आप अच्छी कॉल ना करें कि ये मेरी कॉल है या आपकी है, तो इसी तरीके से बॉल बिटवीन द फील्डर्स गिरता है। और इससे पहले भी हमने देखा कि जो चौके या छक्के लग रहे थे, जो प्रेशर इस वक्त वो अल्टीमेटली बॉलिंग पे है। और कोशिश यही होगी इस वक्त बॉलर्स की कि वो बॉल को या तो ब्लॉक होल में रखें या फिर थोड़ा सा फुलर, क्योंकि कोई भी बॉल जो पीछे पड़ता है बैक ऑफ लाइन उस पर बहुत ज़्यादा हिटिंग हो रही है और बैटर्स के लिए बहुत आसान है। बिल्कुल इजाज़, ये फॉर्मेट ही ऐसा है कि इसमें हर वक्त प्रेशर बॉलिंग साइड पर ही रहता है। आपको निहायत ही चौकन्ना रहना होगा फील्ड में भी और बहुत एक्यूरेट रहना होगा अपनी लाइन एंड लेंथ को लेकर भी। इस दफ़ा लॉन्ग ऑफ की जानिब खेला, एक सिंगल बना। मतलब यहाँ पर जो बाउंड्री है, जैसे पहले भी बात की कि अगर बाउंड्री की जानिब बॉल जाता है, अगर आप क्लीन हिट करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज एक ही मिलेगा आपको। या तो आप डीप मिड विकेट पे खेलें या फिर कहीं एक्स्ट्रा कवर की जानिब, तब आप 2 रन बना सकते हैं भागकर। अदरवाइज आपको सीधी सीधी बाउंड्री की जानिब जहाँ पर फील्डर मौजूद है 1 रन ही मिलेगा। या तो आप बहुत ज़्यादा तेज़ एथलीट हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट आपकी बहुत अच्छी है, तो आप जल्दी से 2 रन मुकम्मल करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर 1 रन काफ़ी है। दूसरे के लिए पलटे, ये है अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड। बहुत ही शानदार रनिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं इस्लामाबाद वॉरियर्स के बैट्समैन इस वक्त। कोई भी गेंद, कोई भी रन हाथ से जाने नहीं देंगे। और इस वक्त और ये फ्री हिट मिली है इस्लामाबाद वॉरियर्स को, लेकिन इसका फायदा नहीं उठा सके। इस्लामाबाद के बल्लेबाज आसिफ अली ने फ्री हिट पर ही डॉट बॉल कर दी। अच्छा, इस वक्त अच्छा रीड करें कि जैसे जैसे उन्हें पता लगा कि बैटर जो है वो मूव कर रहा है
और ये अच्छे बॉलर की निशानी होती है कि वो उसके फुटवर्क को रीड करता है और उसी तरफ जो है वो बॉल को फेंकता है। अभी भी बॉटम हैंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सीधा खेल दिया इस बॉल को, एक ही रन बनेगा। देखिए इस वक्त भी बॉल जो था थोड़ा फुलर था, तो इस पे सिर्फ एक रन बना। इससे पहले हमने देखा कि जो भी बैक ऑफ लेंथ डिलीवरीज हैं या लैक ऑफ पेस आती है उनमें, वहाँ पर ऑन साइड पे ज़्यादा और ऑफ साइड पे कम लगे, ज़रूर छक्के या चौके। बिल्कुल, और एक T10 फॉर्मेट के लिए ये बड़ा ही परफेक्ट ग्राउंड है। वाइट बॉल, वैसे इतना बड़ा रनअप नहीं है, इतना लंबा रनअप नहीं है, एक्यूरेसी होनी चाहिए। लगता है यही है कि थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि बॉल को जो है वो विकेट या स्टंप्स के करीब रखें या पैड के ऊपर जो है वो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लेग बिफोर हासिल करें, क्योंकि ऑलरेडी एक विकेट लेग बिफोर से आ चुकी है। ऑन साइड पे खेला इस बॉल को और गैप में निकालने में कामयाब हुए 4 रन्स के लिए। उम्दा और अच्छा टाइम पे शॉट खेला, जरूरत थी इस वक्त। 50 मुकम्मल हुए। निहायत ही स्टाइलिश शॉट खेला आगा शराज ने और उसके नतीजे में उनको एक मच नीडेड मच वेलकम बाउंड्री जो है वो मिली है 4 रन्स के लिए। और काफी इवेंटफुल ओवर रहा है ये अरसलान का। पहली ही बॉल पर कैच ड्रॉप हुआ, एक रन आउट का मौका भी मिला और बस अब एक ही गेंद बाकी है इस ओवर की। और इस एक बॉल पे बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि आप देखना है कि मज़ीद उस बॉल को कंटिन्यू जैसे ऑन साइड या ऑफ साइड पे ऊंचा खेलेंगे, लेकिन प्रॉपर्ली हिट नहीं कर पाए। इसके साथ ओवर का इख्तिताम हुआ। 4 ओवर गए, 50, 1 विकेट के नुकसान पर इस्लामाबाद वॉरियर्स। अपने फील्डर्स को प्रॉपर जगह पर रखते हुए, प्लेस करते हुए इनफैक्ट, क्योंकि ऑलरेडी 50 रन आ चुके 4 ओवर्स में, तो एक अच्छी शुरुआत इस्लामाबाद वॉरियर्स की जानिब से। क्योंकि जब विकेट गिरा था जैन का तो ऐसे लग रहा था कि परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन आसिफ अली और उनके साथ आगाज शहराज की जो शराकतदारी है काफ़ी बेहतर। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो T10 फॉर्मेट के क्रिकेट है कि आपको कम बॉल खेलने हैं, तेज़ हिटिंग करनी है और ज़्यादा रन बनाने हैं, इन दोनों के दरमियान अब तक वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आई। और इससे पहले भी अगर हम देखें
जब लाहौर में या कराची में ये प्लेयर्स खेलते रहे तो इस तरह के जो टास्क हैं वो इन्हें मिलते रहे, तो इसलिए कोई अनयूजुअल नहीं है इन प्लेयर्स के लिए, इन स्टार्स के लिए इस तर्ज की सिचुएशन में आना। ऑन साइड पे खेलने के, इनफैक्ट बॉल ये पिच हुआ ऑन साइड पे एक्स्ट्रास। अब तक हमने देखा कि लगभग जो भी बॉलर आया पहला बॉल उसका वाइड ही रहा। ये एक ट्रेडिशन हम देख रहे हैं और ये पहली इनिंग्स हम देख रहे हैं कि ये होता जा रहा है। और बीट हुए आसिफ अली इमरान की इस बॉल पर। बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे लेकिन बॉल बल्ले पर नहीं आया, सीधा विकेट कीपर के पास। 3 रन बनाए इन्होंने 9 गेंदों पे। चाह रहे होंगे कि एक बड़ा शॉट खेलें और इस डेफिसिट को कम करें, और उछाल दिया उन्होंने, उठा दिया बॉल को 6 रन के लिए। बहुत ही उम्दा शॉट। देखिए इस वक्त नीड ऑफ टाइम और एज पर रिक्वायरमेंट खेल रहे हैं और ये बहुत बेहतर है। इंटेलिजेंट क्रिकेट, जैसे कि पहले हमने बात की कि ये जो हमारे स्टार्स हैं ये नॉर्मल लाइफ में भी ना सिर्फ फिल्मों या टीवी ड्रामों में एक्टिंग नहीं करते बल्कि अपनी फिटनेस को, क्रिकेट को बरकरार रखते हैं। ये बॉल हवा में है लेकिन फील्डर बॉल से थोड़ा सा दूर रहे। अच्छा मिस, इनफैक्ट मिस हिट था और काफ़ी लकी रहे कि इतनी ज़्यादा पार नहीं थी इस स्ट्रोक में। चाह रहे थे कि एक और मैक्सिमम के लिए जाया जाए और अपना ये बॉल डेफिसिट को कम किया जाए, लेकिन इस बार मिस कैलकुलेट कर गए अपनी इस शॉट को। खुशकिस्मती से वो किसी फील्डर के हाथ नहीं आया। अच्छा स्लो रन बॉल था और ये बेहतर है कि जिस वक्त आप प्रेडिक्टेबल ना हो एज अ बॉलर, कि एक बॉल आपका थोड़ी ज़्यादा पेस के साथ, अगला कम पेस के साथ, क्योंकि बैटर ने आपको परखा हुआ होता है पहले से कि कितनी पेस के साथ बॉल करवा रहा है इस वक्त बॉलर। रूम बनाया लेकिन प्रॉपर्ली हिट नहीं कर पाए। फिलहाल लगता है कि थोड़ा जो ह्यूमिड मौसम है उसका इम्पैक्ट जो है वो आता है कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होते हैं प्लेयर्स। बिल्कुल, और अब ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो 10-10 गेंदें खेल चुके हैं। इनकी कोशिश होगी कि अब बड़े स्कोर की तरफ जाया जाए, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 5 ओवर्स की ये गेम हो चुकी है और अभी भी एक पहाड़ जैसा हदफ सामने बाकी है। रूम बना कर के लिया इसको लॉन्ग ऑफ की जानिब। अच्छा आसान कैच। ये बॉल बहुत तेज़ी से ट्रेवल कर रहा था और बिल्कुल सीधा उनके फेस की जानिब बढ़ा और अपने फेस के सामने इस बॉल को ग्रैब किया। एक्सीलेंट, बहुत उम्दा कैच। कोई गलती नहीं की फील्डर ने, बिल्कुल, और ज़बरदस्त कैच पकड़ा और इसी कैच के नतीजे में आगा शिराज को अब वापस पेविलियन जाना होगा। एक अच्छे टच में नजर आ रहे थे। और इसी के साथ हमारे कॉम बॉक्स में होगा एक चेंज। नुमान और साइम आपको ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। Thank you so much, Ajab. And 59 runs with the loss of 2 wickets after 5 overs, and the target is 145 runs for Islamabad Warriors. So they have to chase down this target. They just have 5 overs left. They have to do something really special to win this game. What's your views, Naman? Thank you, Saim. 86 to get from the last 5 overs. Considering that they have just lost a wicket, seems like it's going to be a very difficult chase for the Islamabad Warriors. They got a good start though, getting 60, around 60 in the first 5 overs. Still 145 to chase. Seems like a big task. They need to have a partnership right now. Is batting on 21 from 10 deliveries. Saim has just come in. Asim has just come in. Saim has just joined us in the com box. 145 is a target, and this is where you got to show some sort of aggression, because we have some sort of crowd in there. T10 format is all about entertainment.
You need to bring in some boundaries into play. You need to score some quick runs. It's 86 of 30 deliveries. It's definitely not a child's play, but with cricket, anything is possible, especially with the T10 format at the Rawalpindi Cricket Stadium with the shorter boundaries. Yeah, definitely, Niman. The floodlights will brighten up. And what do you think about at night matches, about the dew factor affecting the games? It's a T10 format, and dew factors in Rawalpindi Cricket Stadium, because you're a local resident and you're better about it. So what's your views about dew factor affecting the match and night matches especially? To talk about the dew factor, and especially in the current month, in July and August, I mean, it's humid all over the place. You expect the dew to be there throughout the day, not just at the night time. But currently, you're talking about the game. All of these players, the batters, they're at the ground. They're waiting. Most probably, there's a prayer break. There's an azan break going on. If we talk about the game, we were mentioning about the dew factor early on. The most important factor, I mean, if you talk about the players, how should they cope up with that? I mean, being a bowler, it's very difficult. It's the dew is there. You gotta face the difficulty holding the ball, and that's where your experience comes into play. We have seen in international cricket, have all the bowlers, the captains, and everyone holding towels with them. Yeah, we are expecting more crowd from Rawalpindi to enjoy these matches, because the film stars, the drama actors are playing and the ground, so their favorite celebrities all there. And match 1 is between Islamabad Warriors versus Lahore Heroes, and it's live from Pindi Cricket Stadium. It's 5 overs, 59 with the loss of 2 wickets, and target is 145 runs. So they just have 5 overs left and the pocket to chase down this target. This is not easy in last 5 overs, because some sort of pressure on the batting team. They have a huge total on the scorecard. Yes, exactly, and the responsibility lies on the shoulders of Agha Shiraz. Agha Shirazi conceded a lot of runs when he was bowling. So now it's his time to give up show some fight with the bat. Already scored 60 on the board. Agha put up a brilliant effort in getting those runs. We're talking about mentioning about the weather early on and the humidity. So it's difficult for the professional cricketers, and talk about those celebrities. How difficult would that be for the celebrities out in this humid weather, playing for the entertainment, for the cause? It is the 5G presents DCL T10 League. Yes, it's a rainy weather in the morning when we mentioned that we have witnessed a rainy weather, but it's all credit goes to ground staff. They've done a spectacular job in the ground in Rawalpindi Stadium to arrange this arena and this match. And this is the first match, and you're watching all the preparations, although, and they're playing in floodlights. So it's first ball of the over from Arsalan. Oh, it's a very good ball, just getting a little bit of a swing into the keeper's hand, and it's a dot delivery. We start this from Arsalan. We have, when a left-hander batter is playing, you need to take the ball away from the left-hander. Being the right-hand seamer, the right-arm seamer, the ball has to go away from the left-hander batsman, because this is where the natural angle comes into play. It's definitely, the ball is drifting up, the ball is swinging. And again, this time outside the off stump, and a little bit of fumble, and keeper missed it. It's gone for 4. Let's see the signal of the umpire. It's a legal delivery. It's not a white, I think so. And it's gone for 4. So it's extra runs added on the scorecard. Exactly, I mean, look at that. This one went away from the left-hander batter, and the keeper could not stop the ball. And you got to stop those runs. I mean, you should not concede extra runs, especially when you are defending a total. No matter you're defending a smaller total or the greater total. But 145 still. The game is swinging in the favor of Lahore Warriors. Agha Shiraz need to do something very extraordinary to take his side over the line. Once again, a slow delivery. This time lofted. Chance for the fielder, but he could not stop that. This has gone over the fence for a 6. So once again, the brilliant counter-attack from Agha Shiraz continues.
Just look at that, 2 back-to-back deliveries outside the office stump, and then third delivery. But Agas put it down, and he uses full face of the bat and gone for 6. It's gone for maximum. Spectacular shot, 3 back-to-back, same deliveries outside off stump, and he pulls it off. Gone for 6, and it's a maximum. What a shot. And once again dabbed very nicely. No fielder was placed at third man. This will run across the fence for a boundary. Brilliant batting from Agha Shiraz. Yeah, definitely, Numan. Back-to-back boundaries, 1-6 and again a 4. This will turn pressure to the bowling side. This shot, look at that shot. A very confident shot. No fielder at that position. And the bowler raises away to the boundary for 4. Nice shot. Sudan must be under pressure. Once again, slammed down the leg side. He has changed his line. Could not control that. Talk about the field set. He has a fielder back at the deep square leg, deep mid wicket, deep long on, deep long off, and deep extra cover. So with that field, you need to bowl fuller on the leg stump because you have long off and the mid wicket back on the fence. Once again, Fuller on the off stump. This time is gone. The aerial route. Chance for the fielder. But he could not stop that. And once again, another boundary added to the total for the Islamabad Warriors. So they're going along great guns. Yes, this time over long on, and the ball raises away to the boundary for 6. That is a spectacular shot. Look at that shot again. He lofts it back. Fielder there at that position, but no chance for the fielder. Aerial route, and ball goes over the boundary rope for a 6er. It was a boundary, and it was also given a no ball by the umpire. So that was the overstepping from Arsalan. So this will be a free hit. Can't change the field. Ah, that's a wide. That's adding insult to injury. This is a very expensive over from Arsalan. Boundary, 4 byes, followed by a 6, followed by another boundary, wide, 5 runs, a no ball and a boundary, then another wide. So seems like the Islamabad Warriors, they are back in the game big time. Yes, if they wanted to win the match, so Agha must take it back to the end. And at this time, a free hit, Arsalan again. Oh, again outside off stump, and another extra call. And umpire called it another no ball. It's not a wide, it's a no ball again. So back-to-back no balls. It's free hit again. So pressure turns on the bowling side. Exactly, 22 of the over already. And putting yourself in the bowler's shoes. When you are struggling with your line and length, what would you do? Especially when you are considering a number of extras. This time outside the line of off stump, a slow ball, good change of pace this time around from Arsalan. You need to be varying your pace when you are up against the batter of Agha Shiraz's capability, because he'll hit you out of the park if you bowl him in the same zone. Yes, definitely, Arsalan is a very good bowler. He's bowling outside off stump again, and it's the last delivery of the over. Oh, it's on the pads, and just a single to end up this over, and it's 82 with the loss of 2 wickets after 6 overs. Let's talk about T10 cricket. You're witnessing that. First of all, there's 6 overs are gone, 82 for the loss of 2 wickets. Islamabad Warriors, they're chasing a target of 145. It's D-Concept presents Celebrity League T10, powered by 5G Group of companies, and next match is between Peshawar Tigers versus Rawalpindi Stars. So it's a big match coming, match 2, live from Rawalpindi Cricket Stadium, and it's T10 D-Concept Celebrity League between Peshawar Tigers and Rawalpindi Stars. First 6 overs are done, and now still 82 for the loss of 2 wickets. Islamabad Warriors are chasing a target of 145. Well led by Agha Shiraz. Knock of
36 from 18 deliveries. And talking about the previous over from Arsalan, that was a 10-ball over. You don't expect such type of overs in any format of the game, be it T10, be it T20, or be it a test match. So they need to capitalize on the extra deliveries. And now the equation is 63 needed from 24 deliveries. And this seems more of a very, very gettable target. 15 in an over would nearly take them home. Let's talk about the style of the bowler. It's a resemblance with the Chris Gayle. He's a very experienced bowler. He's a very experienced player this time and missed it. Appeal and gone. And he's bowled it. He done it. And this time first ball and he rattled the stumps. Off stump gone off and he just got the wicket in the first ball. What a delivery. What a beautiful piece of delivery, and he just rattled the off stump. Another batsman departs. It's 82 for 3. Yes, exactly. And Agha Shiraz was the one who was dismissed. Have a look at that. It was the off spin, played across the line, completely missed the line of the ball, and the off stump knocked out. So good start to the over. Imran struck, and Agha Shiraz, he played a terrific knock, scored 36 from 19 deliveries. He's walking back to the hut. And once again, you were talking about a different style from the bowler. He did produce something which no other bowler did. That is something special from the bowler. So wicket has gone down, 82 for the loss of 3 wickets, Islamabad Warriors. Yes, he completely deceived the batsman. Agha is a dangerous batsman we're talking about. He had to carry on the bat if they're going to win the match. But he's gone now. The next batsman in. It's 82 with the loss of 3 wickets. Let's talk about the cricket. And we're witnessing Test cricket, then one day, then T20, and then T10. It's a popular type of cricket all over the world. We are witnessing some T10 leagues in UAE, in Oman, the next in Pakistan. So what's your views about the T10 cricket? Because cricket is all about the entertainment. Yes, exactly. If we're mentioning about cricket and entertainment, previously seeing about the food, that is another source of entertainment for people in Pakistan. But talk about the T10 format. Yes, it is something which is associated and sanctioned by the International Cricket Board, International Cricket Council, I beg your pardon. But yeah, it is cricket as well as the entertainment. And especially if you talk about this tournament, the 5G presents D Concepts T10 League. This is also cricket, followed by entertainment. We have celebrities featuring in this tournament. So it's good to see people from all over the world, all over Pakistan have tuned in for this game. I'm outside the line of off stump, nicely taken out to the fielder at a deep extra cover. If you talk about the target, 145, they just lost a wicket. And Imran, the experienced pro, has picked up 2 wickets. Now he's into his second over, only conceded 10 runs. And mentioned the word only because given the context of the game, the current run rate is 13.11. The required run rate is 16.97. Good delivery this time once again out to the fielder at short square leg. So if we talk about how being a bowler, how do you survive in such sort of situation, especially when the batter is attacking you, be it any format, let it be a T20 game or a T10 game. What sort of difference would you bring in with your bowling? You need tons of pace at that position because you're struggling with this type of... if you're in T10 cricket this time, this ball, no runs, it's a dot delivery into the final leg position fielder there. Let's talk about it at that position where your current run rate is 12 and you just need 18 required run rate. So you must need some change of pace, some good deliveries. You have to bowl on a fuller length, some good length deliveries to... So this is the format, we are talking about it, and they just need not much more runs. Let's talk about the run rate again this time. Oh, he needs to loft the ball, but no chance. It's a very good delivery. Easily, they have taken a single. Well, I would go with the change of pace. You need to have experience and you need to change your pace. You need to vary your pace every now and then when you are facing a batter who is experienced. So you just need to vary your pace because that will just puzzle the batter. Because once you will bowling at a quicker pace and then the other time you just change the pace. This time a slow one. He's knocked him over. This is what I've been mentioning over and over. You need to change the pace. This was a flighted delivery and Imran has struck gold. He's picked up his 3rd wicket. And once again,
The damage has been done for Islamabad Warriors. They have lost their 4th wicket in the 7th over. It's 85 for the loss of 4th wicket. And have a look at that. Imran using all his experience. A slow delivery played across the line once again. 2nd wicket of the over for Imran. And with that, Asim Mahmood could only face 2 deliveries. Could not score a run. So he's gone for 0. It's 85 for the loss of 4 wickets. Chasing a massive total of 145. Yeah, definitely. It's a duck. And it's 85 with the loss of 4 wickets after 7 overs. They have to chase down the target of 145 runs. So it looks difficult. It's a T10 game. Cricket is a by chance game, but it looks very difficult at that stage. Alright, then we're done with the 7 overs. 85 for the loss of 4 wickets. Islamabad Warriors got to chase a target of 145. You need to have wickets in the hand for the last overs so you can accelerate. But right now, the previous over from Imran has dented the proceedings for Islamabad Warriors. Seems like the target is out of reach for the batters. But right now we have Arbaz Khan in along with Rizwan Ali. Just need to pick up the momentum. Vaji is the new bowler. This time lofted off. It's high up in the air. Fielder underneath the ball. And he done the distance. Spectacular shot. First ball. And he done the distance. It's gone for a maximum. What a shot by Arbaz Khan Rizwan. Spectacular batting performance. And what a shot. Look at that shot again. He lofted back toward the square leg boundary. Shot again, this time down the ground. Fielder underneath the ball. And he drops a sitter. He drops a catch. And umpire signals it's a 4. It's not a 6. He saves a 6er. But it's a sitter. It's a catch. An easy one. But he drops it. Yes, exactly. This was a high ball once again. Played straight down the ground. It was a chance for the fielder. It's again cut and cut nicely. Straight to the fielder. What a catch! This is a brilliant effort from the fielder at point. And when you're dropping easy catches, some of your fielders could put blinders. Have a look at that. Brilliant effort from the fielder at point. And even he could not believe it. It's definitely what a catch. Look at that diving. He dives forward and take a spectacular stunner catch. Look at that catch again. A shot to the point, fielder there, and he dives. What a shot. And he done a very spectacular catch he has taken, and they're celebrating the success. You just take like a professional cricketer, professional fielder, and Rizwan Ali was not happy with his inning. He just scored 12 runs and 6 balls, and he's gone. Waji strikes back, and it's 95 for 5. Let's talk about the run rate. They just have 15 to 16 balls, and they just have to score more than 50 runs. So it's look much difficult from here for Islamabad Warriors. They already lost their 5 wickets, 5-man batsmen. Now the tail end is coming in after some more rounders. So it's much difficult. Yes, we've been mentioning over and over. When you are chasing a target of 140 plus in a T10 format, you need to have wickets at the end of the innings, in the later phase of the innings, so you can take the risk of hitting out on every delivery. So this is what they did. They lost wickets at the start of the innings, at the middle phase of the innings, and now they just lost a wicket right now. When Rizwan, he looked settled, he was hitting all over the park, but he could not control a ball, he could not keep a ball down.
That was a good catch from the fielder. So they lost 5 wickets. We're into the 8th over of the innings, and have a look at that. This was the last performances from these batters, and as you can see how this innings has gone about. Rizwan has played some sensational knocks around. Have a look at that. It was a chance for the fielder, could not take it, and once again this was a stunning effort from the fielder at point. Brilliant grab to end the innings of Rizwan. So 5 wickets are down for Islamabad Warriors, chasing 145. Noman, if you remember the catch of Jonty Rhodes, South African fielder at that position, that catch was spectacular. And I just remember that catch of Jonty Rhodes, and he has taken a stunner. That's match number 1 between Islamabad Warriors versus Lahore Heroes, and it's live from Pindi Cricket Stadium. 2.3 overs left, and they need 50 runs to win this contest. That's not easy from here, but they have to do it because it's first match. If you lost the first match, so that the pressure onto your team, so that new batsman is heading towards the pitch. They have lost the 5 wickets. Now the new batsman is. It's a good sportsman spirit that they are. Saad Rashid is the new batter in, and both Arbaz and Saad, the new at the wicket, the fresh pair, and they need to do that rebuilding phase. But right now, very less time left for that. Only 15 deliveries to come, 50 runs to get. They need to utilize the number of deliveries, need to score the maximum out of those 15 deliveries. Waji again, and he conceded 10 runs in this over. In last over, he conceded just 7 runs, but in this over, in last ball, he's taken a wicket with a stunner. First ball, and it's a peel, but umpire denies. It's not out, outside off stump. It's a very good delivery. I think that he's gone for a single, but it's not easy to take. Waji is continuously turning the pressure in. Again, and then I think so. It's a wicket. Yes, umpire wins it. What a ball, and another batsman departs. It's right on the block hole. It's an LBW appeal, and umpire calls it a wicket. So another batsman departs. Saad with the duck without scoring any run. Within the last 11 deliveries, they have lost 4 batters. Have a look at that. This one pitched on the middle stump. It was hitting the leg stump. A very good delivery. It was probably an armour. It pitched on middle stump. It went on to hit the leg stump. So another wicket. 2 wickets in the over for Waji, Saad Rashid. Another duck. So Islamabad Warriors, they're really struggling. 95 for the loss of 6 wickets. Tell me about the winning percentage, winning probability between those two teams at that stage. With 2 overs left, and they need 50 runs. I think it's 80-20 because cricket is a by chance game, and we can expect anything. But they have already lost their 6 wickets. They just have 4 wickets in their hand. They have their tail-enders. But cricket is a by chance game. I think, according to it's 80-20 game from now this side when they just have 2 overs in their pocket. Well, I guess you're being a little too optimistic with 80%. With giving 20% to Islamabad Warriors seems like it's a lost cause for them, but I'll surely go with 90 and 10. 90 for the Lahore side and 10% for Islamabad Warriors. But as you mentioned, that cricket is a by chance game, and you cannot predict the result. You can predict the result, but you cannot be sure about the result till the last ball is bowled, till the last run is scored. About the Salim Sheikh, famous actor and my childhood hero. Now, Waji's
really confident because in this over he has taken 2 wickets. He has conceded 2 boundaries, but 2 wickets and turning pressure on the batting side is the positive sign for the bowling attack. Again, outside off stump, little bit of swing, fielder there, and it's a run-out chance, and he missed it. Not an easy one, but a very good delivery, little bit of swing, and good fielding. It's 8 over completed. After 8 overs, the runs are 95 with the loss of 6 wickets. Look at this ball again, very good delivery, and fielder thrown it back to the keeper. No run, it's a dot delivery to end up this over. It's done. 8 overs are gone, 95 for the loss of 6 wickets. Islamabad Warriors, they need a further 50 runs from the last 2 overs. They have 12 balls in their pocket, and the Islamabad Warriors in 95 with the loss of 6 wickets. They just have 12 balls to chase down a massive total on the scorecard. They have to score 50 runs to win this game. Zaman, new batsman, is on the strike. Both the batsmen are new on the crease. Time with the straight bat down to the fielder at long on. Could only add a single to the total, and singles are not going to hurt the Lahore Heroes. They need to prevent the boundaries, and I feel like they're doing it with ease and grace now. Defending a total of 145 and a T10. You always have the upper hand. Have a look at that. Outside edge. Chance for the fielder at point, but he could not grab that. The ball would be cut off from the fielder at third man. Just single added to the total. So right now with the batting approach, seems like Islamabad Warriors, they have kind of given up, because it's only 10 deliveries, 47 to get. So 8 sixes out of the 10 deliveries. It's the third ball of the over. They have 10 balls in their pocket to score 47 runs. This is a short ball, a slower delivery, change of pace, which we are talking about, change of variation, just for a single. And he drags the ball to the mid-on area where fielder there, just for a single. Now the required run rate is more than 30. It looks impossible. Again, this is a very good ball on the block hole. He has to bowl. He wanted to bowl a Yorker, but a very good delivery. Ball on the good length, and it's a dot delivery again. They have 8 balls left. Have to score 46. It looks 100% and a 0% now. Again, outside off stump, an umpire calls it a wide. Another extra added to the scorecard. Well, this has been an excellent performance from Lahore Heroes. Complete dominance both in batting, bowling, and the fielding unit as well. Especially the catch that has been taken at the fielder at point. Just showed how dominant they were. Oh, knocked him over. What a delivery that was. The middle stump uprooted. A brilliant sight for a fast bowler. And Mohsin, he was expensive in his first over. A brilliant comeback in the second one. And a 7th wicket has gone down. Islamabad Warriors, they are struggling. 100 for the loss of 7 wickets. And have a look at that. Tried to heave it across to the long off fence. But middle stump uprooted. 7th wicket has gone down. Just a reward of consistent bowling from Mohsin. Arbaz goes back for 100 for the loss of 7 wickets. It's definitely Salim Sheikh, the captain, is really happy with the performance of the team, especially their batting first. They have scored 145, spectacular batting performance, and after that in bowling they have done extraordinary performance. 100 up for Islamabad Warriors with the loss of 7 wickets. They just have 1 over, and after that they're gonna win their first match. Floodlights are lighting up in the Rawalpindi Cricket Stadium. And these T10 matches are crowd puller
but Pindi crowd is not taking much interest. So we request all the crowd, all the people of the Pindi to come to the ground, to Rawalpindi Stadium, and to support your favorite celebrities, your favorite actors. It's 100 for 7. We're enjoying the game, really, these night matches. Now a new batsman, another my childhood hero, Tipu, is heading to the pitch. He's super fit at that age, and now he came to bat after 7 wickets down. Yes, look at that. He's cheering up the crowd, and he's really happy. This is the sportsman spirit that the owner really looks happy. You might lose or win, no chance, but it's not. Yeah, exactly. You got to appreciate the sportsmanship, the way they all welcomed him. It's just a brilliant gesture. Although they are at the losing position of the game, 45 needed from 7 deliveries. Yet, you got to appreciate the way he came to play, and you got to admire the way they all welcomed him at the crease. Yes, Zaman Khan has the non-striking end, and Salim Sheikh is setting the field for these last overs. The matches in the last time, and they just have 1 over, more than 45 runs needed. So they looks really happy, Islamabad Warriors. They've done a job. They've done their job in their first match, and they looks pretty confident. Last ball of this over. Oh, just it's a run-out chance and missed it. It's a fumble between 2 batsmen at the striking end and the non-striking end, and no runs at the last ball. It's a dot delivery to end up the over, and it's 9 overs gone, 100 with the loss of 7 wickets. .45 needed of last 6 deliveries, and Sam, we're talking about a surprising fact. The captain of Islamabad Warriors, Mohammad Rana, he never showed up. I mean, we all were waiting to see him give it a try. I mean, chasing 50 in the 2 overs, wasn't that easy, but still he could have given it a try. But we haven't seen him ball in the game. We haven't seen him bat in the game. I think he has shown the respect for the seniors, because Tibu comes into bat, and again, this time outside off stump, getting a little bit of vert, and the keeper takes it easily, and Empire calls it a wide. So another extra. We're talking about Momarana. The captain hasn't come, so I think, according to my perspective, Momarana have shown some respect for the senior actor and senior player Tipu. He comes into bat. Yeah, exactly. And talking about Kamran, he was a hero with the bat. Then he took a blinder in the field, and now he's going to ball the last over of the innings. Good delivery this time. And both batters, there was a slight misunderstanding between both of these batters, but they crossed for a single. And now it's up to the senior pro, Tipu, to face the music. Last 4 deliveries of the second innings. On the back foot, straight back to the bowler. Tipu knows that he's playing his game. They just have 3 balls left in the pocket. Again, he wanted to lock sweep this time. He wanted to loft the ball, but he just missed it. Kamran was the hero with the bat, and again with the ball in the last over. Oh, again, this time he wanted to play the ball down the ground, but just a single fielder there. So it's all over, I think, for Islamabad. And first match, it's gone for Lahore, and they won their
first match against Islamabad already. Oh, again down the ground this time. Fielder there. Again, it's a single. Well, a sensational performance from the Lahore Heroes. They have registered the first victory of the tournament. Throughout the game, they dominated first with the bat, then with the ball, and through some brilliant fielding efforts. So it's the first victory in the tournament for Lahore Heroes. A good fight back, this from Islamabad side, but they could not pull off the target. Brilliant performances throughout the game, and we have seen the spirit of the cricket, both players of both sides are shaking hands. Murad, Kamran, Danial Arshad, Imran, the notable performers from the Lahore side. They have registered the first victory of the tournament, courtesy some brilliant performances. A complete dominant performance by the side, with the bat, with the ball, and also on the field. And Lahore Heroes, Lahore won their first match by 39 runs. So it's their first victory. They looks pretty confident after this victory. And this is a look at that. The scorecard: Mirza Zain Beg have scored 20 runs in 9 deliveries. After that, Asif Ali was catched by Haider and bowled by Imran, have scored 10 runs. Agha Shiraz bowled by Imran, 36. And Rizwan Ali with 12 runs. Asim Mahmood with a duck. And Arbaz Khan have just scored 1 run. Saad Rashid with another duck. So Zaman Khan also have scored 5 runs, and Tipu Sharif not out with 1 run. We're talking about Mohammad Rana. He hasn't come to play. Yeah, it has been a good display of bowling from Lahore side. They've been brilliant throughout the game. They conceded some runs at the earlier phase of the innings, but we talk about the innings highlights, the way this inning was started by the Islamabad side. Brilliant start from both of these batters. Have a look at that. The width was over on the leg side. It was gleefully accepted, and again some sloppy fielding in the first phase of the innings by the Lahore side. The cap was there through the cover fence and tried to heave that across mid-wicket. Firstly, it wasn't given by the umpire, and then Agha Shirazi came in with a brilliant cameo from the left-hander. Sajaz was mentioning that he was recently moved to Islamabad, and so again he just showed his skills right at the time. This was the over. They got 22 from that over, but once again we're talking about the bowlers with the lesser pace. The spinners struck gold, picking up 2 wickets in the over, and once again Agha Shiraz tried to score some runs, and he was the leading batter for the Islamabad side, but he could not take his side over the line. Some brilliant hitting from Agha Shiraz, but once again played across the line to a delivery that was a straighter one, and then Imran picked up 2 wickets in the over. I just set the tone for the victory of Lahore side. But Rizwan showed some intent with a couple of sixes, one over mid-wicket and the other one straight down the ground. This was at a catchable height, but it's difficult. But have a look at this catch. There's a fielder at point. Kamran, a sensational effort. This will be remembered for a long time. And again, this was a straight delivery. It was going on to hit middle and leg stump. So complete dominance. Have a look at that. Arbaz, middle stump, knocked over. Lost wicket at the regular intervals, and so reason why they could not chase down the target and had it an easy victory. 39 runs is the victory margin. So it's Lahore Heroes, the Concept Celebrity League T10, powered by 5G Group of Companies, and Vaji Farooqi bowled 2 overs, 17 runs, and he taken 2 wickets with economy of 8.50. Mohsin Awan with 2 overs, 19 runs, 2 wickets with economy of 19.50. Murad Haider 1 over and 16 runs with 16 economy. Arsalan Faisal with 2 overs, 28 runs. 0 wicket with 14 economy. Imran, Emo and Kamran also hero with the bat and also with the ball. And the last over, he just have bowled 1 over and spectacular over. Stunning batting performance. This is the scorecard. Lahore Heroes, 10 overs, 144 with the loss of 2 wickets, and Kamran was the hero with 55 runs. With him, Danial, he has carried on the bat, 47 runs in just 27 deliveries, and Rizwan have taken 1 wicket with Saad also 1.
Islamabad Warriors have just scored 105 runs in 10 overs and chasing down the target with Agha with the top score of 36 and Imran with 3 wickets. He just conceded 11 runs and Waji with 2 wickets and Mohsin with 2 also. So Lahore won by 39 runs. A complete dominance in the first game by the Lahore Heroes. We'll take a short break and we'll be back for the next game in a while. This TCL T10 is brought to you by T Concepts and 5G Group of Companies. It's all about real estate. तक मेहनत करनी है तो अल्लाह ने इज्जत दी है. That's it. Thank you so much. And now I would like to call over here और हमारे साथ जो losing team के captain है one and only मोहम्मद राना से please join करें हमें यहाँ पे. First of all, I just want to say that कि हमने सारी टीम की सारी मेहनत देखी, सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, बॉलिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन बैटिंग में थोड़ा सा हम लोग जो है वो लूज कर गए. आई थिंक मेरे ख्याल में यही कमी थी. एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या वो मेरा जो इन बच्चों के साथ कनेक्शन लड़कों के साथ था, मुझे पता ही नहीं मेरी टीम में कौन कौन है. एंड वी डिडंट हैव अ कीपर. सो व्हाटएवर दे प्लेड अ ग्रेट गेम, दे बैटेड वेरी वेल माशाल्लाह. एंड माय बॉयज दे बहुत अच्छी बॉलिंग की इन्होंने, लेकिन थोड़ा मेरे ख्याल से 20 से 25 स्कोर ज़्यादा पड़ गया था. बट यू कैन मतलब आप उससे डील नहीं कर सकते जब आपको पता ही नहीं कौन क्या कर सकता है. सो अब मुझे पता चल गया. इंशाल्लाह टुमारो विल कम बैक इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. इट्स टाइम कि हम लोग जो है अभी अनाउंस करें कि आज के हमारे मैन ऑफ द मैच कौन है. सबसे पहले मैन ऑफ द मैच का जो चेक है वो देने के लिए आई वुड लाइक टू कॉल ओवर हियर हमजा अरशद फ्रॉम एक्सेल से जो है वो आएंगे. हमजा अरशद जी बिल्कुल, और जी 5G ग्रुप ऑफ कंपनी से, एक्सेल होल्डिंग से हमजा. और आप सबको बताऊं कि मेरे साथ जो है आज हमारे एक नहीं दो जो है हमारे मैन ऑफ द मैच है. पहले हमारे मैन ऑफ द मैच है